A very good morning to everyone. I hope you all are what? Tell me, present now in class mentally and physically, correct? Yesterday, we did a lot of questions, normal question, advanced questions. Were you okay with all the questions? Did you try to solve all the questions on your own? Bolo. At least 5-6 questions did you try? Are you now comfortable with this perpetuity, annuity, whatever it is, correct? Now tell me, is annuity even a concept now at AFM level with Excel being involved? Bolo. Annuity does have a lot of importance, or are you okay with annuity now? Tell me. Bolo. Annuity has a lot of importance. What do you say? What importance is? Sir, annuity, everything. No. Now perpetuity. Then tell me certain cash flows. Can we do one question? Will you be able to solve it? Bolo. Chal, I'll give you one question. Open up your Excel as well. Correct. Keep your Excel open. Aaja. Company will receive 1700 in year 1, right? Which will grow by 2.5% per annum until 5th year. And after that, the growth rate will fall to 1%. Right? Initial investment is 15,000. Right? Discounting rate for the first 10%. आगे जाके the rate increases to 12%. Chal, can you calculate NPV? The most difficult formula? Tell me. Or the most difficult question? Can you do it on your own, or will you need my help? Tell me. Bolo. Karthik, Kushal, can you do it? Atharva, what do you say? Will you be able to do it? So what is the initial investment? Initial investment कितना था रे? रुको. Now is it visible? Have a look. Yes. 15,000. Do it, chalo. Without my help, can you do it? चलो कार्तिक, do it. केशव, तेरे को तो आना चाहिए. Correct. रूपल मैडम, do it. कनिष्का, solve it. चलो. यश, solve it. हर्ष, quickly. Horizon period is of 4 years or 5 years? Tell me. 4 years or 5 years? Tell me. Chalo, do it. I'll give you 2 minutes. Can I do it? Tell me. Karu? Or directly give me the NPV. Chalo. So 222 9.3. 222 9.3. Okay. Everybody doing it? Chalo, jaldi do it. Same, sir. 222 9.21. 222 9.3. ठीक. Let me also do it. I'm also doing it while I'm freezing the screen for you to what? Check it with me. आ जाओ.
चल 1700 एनआरए राइट, पहले 2.5 से इंक्रीज होगा, करेक्ट, and then 1%. Okay. And then what is the discounting factor for first 4 years? 10%. Right? कितना आ रहा है? Tell me. How much is it? बोलो, आ जाओ. Is this the answer? देखो जरा. Where did you do a mistake? Tell me. 2059 are an NPV. Is anyone getting 2059 as NPV? Tell me. Positive 2059. Same question, the until 5th year, 2.5%, right? And after that, the growth rate will fall to 1%. एक मिनट, रुको 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 रुको, कितना दर है बाबा ये? 2.5. हाँ, 2229 बराबर, 2229 करेक्ट, 2229. एवरीबडी गेटिंग 2229? कुशल, व्हाट डू यू से? हर्ष, क्या लगता है बेटा? 2229? कैन आई गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Albina, what do you say बेटा? Done? No, sir, still doing. Do it, चलो. You 2-3 minutes more. Yesterday's last question that we did, it is similar to that question. रूपाली मैडम, हो रहा है क्या क्वेश्चन? टेल मी. हाँ सर, रूपाली आ गया सर. आ गया. रूपाली, yesterday's lecture did you see? I sent the link, right? Yesterday's lecture. Okay, no issue. Chalo, let's go ahead. Now, yesterday was something that we understood was direct method and indirect method. आ जाओ जरा. Were you okay with the profit approach and the cash flow approach? देखो जरा, indirect method. First, did we draw direct method से? Did we draw the NPV का format? Tell me. Direct method से did we draw NPV का format? Just have a look. Makes sense. We also reshuffled it. Were you okay with the reshuffled part? This though I think you have done in FM. Sales minus variable cost minus, that is contribution minus fixed cost, other cost gives you what? Operating cash flow before tax. Then you calculate tax, initial investment, scrap value, TS on TAD, and then working capital investment. Then net cash flow. Are you okay with this, or इसमें was there any problem? Tell me. Any problem with the direct method? I just reshuffled the direct method. What did I do? I took the initial investment and scrap value after tax shield, and I moved tax shield up with the tax. So what happened here? Have a look. What happened here? You have both the taxes together. Sir, tax payable. Same like what we have done here in the notes. We did what? Tell me. We did deduct the tax and added the tax shield and got the operating cash flow after tax. I just did this only in the Excel sheet. Anybody having problem with the reshuffled part? Tell me. Answer will come the same. We can solve one question. Answer will always be the same. Correct? See whether this is okay or not. Everybody. Kushal, what do you say? Tell me. Yes, sir. Understood. Understood. Yash, okay with it? Harsh, Yash, Karthik, Keshav. Reshuffled part, did you have a look? Yes, sir. Now see, I can understand after the 4.5 hour class, correct? It's very difficult to then sit and study.
Am I on the right track? Tell me. Yesterday was the first day. You must have felt like doing nothing. बराबर बोल रहा हूँ ना? Tell me. Or were you very charged up to do the studies? एक एवरेज स्टूडेंट के लिए टेल मी, एवरेज स्टूडेंट लाइक यू एंड मी रहे, डू यू फील लाइक स्टडिंग आफ्टर दैट 1:30 or 2 whatever it is, right? I expect you to see this, right? Did you honestly see it? नहीं बोला, not done, tell me not done. I can understand because after that 4.5 5 hour grilling session, correct? थोड़ा possible नहीं है to go through everything. Am I on the right track? Tell me. It will happen, but what you should do today also, you will not feel like it, correct? But you have the full week to go through everything, correct? So full week may please take out maybe a Monday, you might be going to work doing something, but Tuesday ko at least everything that we have done, kindly go through everything, correct? Tuesday, Wednesday, right? Now I wanted to ask before I start, okay, in the week, right, can we have 1 or 2 classes, right? Thoda sa there is a theory topic, correct? Or we could do what? Practice to this week. This week, whatever today we do NPV, correct? We could practice 1 or 2 questions. What would you prefer? Practice class for 1 hour, maybe 2 or 3 days, or theory you want me to start? Tell me. Practice, everybody. Timing का क्या सीन है? What time is? Tell me. Preferable for you all. बोलो. Evening. Right. Morning, evening maybe 1 hour, right? 10 to 11 ऐसा कुछ चलेगा क्या? Yes, sir. Night. Everybody 10 to 11 or something. Those who are working will also get done with their work, correct? Those who are what? Tell me. Not working can also. अभी ऐसे मत बोलना सर, we don't come home by 10 p.m. Tell me. 10 p.m. तक तो everything or everything बोल रहा हूँ, everyone comes back home. Tell me. बोलो. चल. We could do Thursday, Wednesday and Thursday 2 days, right? Today we will do certain questions, correct? So एक या 2 question if I can solve on Wednesday and Thursday, 2 questions, 1 hour it will take, right? I don't want to what keep you थोड़ा. I can start after this week also, but थोड़ा सा practice I want to start. थोड़ा सा theory topics, practice some or the other things. Are you okay? Tell me. Can I go ahead? I will message in the group tomorrow. Don't worry. Okay. चलो आ जाओ. Now are you okay with the reshuffled part? Can we do NPV format indirect? Can you do it with me? Indirect method. Can we do indirect method? अरे बोलो. Yes, sir. Right. चल. Indirect method में same calculation of NPV of dash company. Correct. Right. Same question. Can you do by indirect as well as direct? Yes. Why not? Correct. आ जाओ. Particulars. Correct. 0 1 2 3 4 and it's a 4 year project, so I am making the format per se for 5 years, correct? Amount in dollars, dollar thousands, dollar millions. ठीक है क्या? Tell me. Everybody with there with me? Please do what? Tell me. Draw this. चलेगा? Have a look. चल. Same thing, sales, right? I could use half the things from here directly. You could copy paste from here. ठीक है. But after this other costs, what will you deduct in indirect method? Tell me. What will you deduct? Depreciation. Correct. And will you get now operating cash flow or operating profit here? Tell me.
Operating profit. net operating profit. Net operating profit before tax है या ये after tax है? Tell me. Before tax. No. Before tax. Correct. Net operating profit before tax. Correct. Then इस पे tax calculate होगा at what rate? Whatever rate given in exam. Correct. So net operating profit is basically your what? एक minute. Decision तो obviously here also you have to take decision 1 and 2. Obviously you have to take decision 1 and 2 for sure. Right. This is what? It could be positive or negative. Correct. Are you okay with this? Chalo, tax done at whatever rate, right? On profits. चलो आगे. Tell me, everybody is doing it with me. Tell me. Tax हो गया. This will be then what? Net operating. Hey, can I write this as PBT? Tell me. Profit before tax. Will it be okay? Are you okay with the word profit before tax? Tell me. अभी आपको लग रहा होगा कि that why are we writing so much in detail? But when you do questions, you will appreciate it. कि questions में you don't have to think too much when you have the format ready, and more of you have understood the format. Correct. This is what checkpoint 1. ठीक है. चलो. You have tax at whatever on profits. Correct. Then you have net operating what? Tell me. After this, is it net operating profit after tax or before tax? Tell me. बोलो. Tax deducted, is it net operating profit after or before tax? After tax. After tax. बराबर है क्या? देखो. This is nothing but a profit after tax. Correct. तो चलो profits deducted from here. Positive भी हो सकता है. In some cases it is negative. Today we are going to do how it will be negative. इसमें भी can there be 2 options? I don't know. Maybe. Right. I have seen that there can be 2 options. Correct. तो यही कॉपी कर लेता हूँ. Correct. Corporation tax at -% on profits, right? Net operating profit after tax, right? उसके बाद, right? You have what? Tell me. Net operating profit done. चलो, this is what? Checkpoint 2. क्या है ये? Checkpoint 2. अभी इसमें क्या ऐड करेंगे? Because NPV analysis you need cash flows and not profits. What will you add in this to go to cash flows, or what will you deduct in this to go to cash flows? Tell me. क्या करेंगे? Tell me. Add back करेंगे या depreciation. add back or deduct depreciation? Tell me. Add back depreciation. Add back depreciation. So I can say it will be nothing but this line only. Correct. Again will be added back, but sir, so it will be positive. It will not be negative. You have deducted depreciation upper, but what will you do? Tell me. Add back depreciation here. Correct. Then after this, where will you go? Tell me. Is this operating cash flow before tax or after tax? Whatever you get after adding. Have a look here. You have written this in your notes. After adding depreciation here, what do you get? Tell me. Bolo, bolo. After adding depreciation, what do you get? Operating cash flow before or after tax? Bolo, bolo. After tax. After tax. Correct. So it is what? Net operating cash flows after tax. Correct. Have a look. This is checkpoint 3. Any checkpoint question can give you, correct? And you have to accordingly what? Work out with it. Okay, net operating cash flow after tax, right? Here also, do you have net operating cash flow? Here I'll add the word net operating cash flow after tax. Logically, by both the methods, net operating cash flow after tax have to be the same for you to what? Maneuver around, correct? Then 3 things from here directly: initial investment, scrap value, and working capital. Gives you directly net what? Tell me.
cash flows. काम खत्म. Net cash flow is checkpoint 4. Then what? You do discounting. उसके बाद NPV. Right? Checkpoint. So this is checkpoint 5 and NPV is the destination. Now the whole format, have a look. Is it visible? Tell me. Have a look. Starts from here, goes up to here. Is it okay, or one question today we are going to solve, right? Accordingly, we will solve the question, correct? If you are okay, then I can go ahead into writing notes for whatever questions we are going to do today. Chalu, tell me. Now see what I will do. Those who are there in class, correct? If I take any weekday class, right, it will not be in what? Okay, something that is going to be in continuation to weekend classes, right? So even if you don't attend a day or two of weekday class, right, it will not harm anything in the weekend class. So don't worry about it. Okay. I hope you're understanding what I'm trying to say. Tell me. They will not have any connection with each other. Yes or no? Tell me. Can I go ahead? Everybody. Chalu. Can I go ahead? Sir. Yes, sir. Write down in your notes. Inflation. There are two types of inflation methods. Write down. Single inflation rate method. Multiple inflation rate method. This is my word, multiple inflation rate method. You will not find this word anywhere. Correct? They use the word specific inflation. They use the word or. Specific inflation rate method. I use the word multiple inflation. Correct? Specific inflation rate method. Write it down quickly. Here, write down when it is single rate, right? Write down all cash flows and discounting rate have a or have the same inflation rate. Right? But when it is multiple inflation rate method, right? Various cash flows, write down various cash flows like sales, variable cost, fixed cost, working capital investment have different inflation rate or inflation rate, and discounting rate has different inflation rate. Can we go to one example on this? Chalu. Now tell me, whenever I tell you, एक second, are you done with this?
चलो क्या डन. Yes, sir. Come to Excel, right? Inflation, right? How to put up inflation, right? पहले I will do single inflation rate method. Okay. Right. Let me give you an example. Right. Now, will you be comfortable when I say or when I give you cash flows like this? Have a look. Huh? When I write net cash flows, are you very clear where I am at? Looking at these formats. Now, are you okay when I say net cash flow? Bolo, bolo. Are you okay with net cash flow? Tell me. The term net cash flow is okay with you or not okay? Tell me. Bolo, bolo. Minus 15,000, 4,500, 6,500, 7,500 and 1,500. Correct? Discounting rate is equal to 10%. Calculate NPV. Karo, calculate NPV. Now this too can you do very easily? Tell me. How will you calculate NPV? Do you require discounting factor and all that stuff? Tell me. Would you require that? Bolo, bolo. Or no? Would you require all that discounting and all that? Or would you use the NPV formula? Tell me. NPV formula. Chalo, karo 10%, comma, what should I do? 0 year to 4th year, no? Correct? First year to fourth year. First year to 4th year. Bracket close and add the initial investment. How much is it? Double one, double two, everyone is getting? Tell me. See, now you have to come at this level where this should not be a problem. Bolo. Is NPV calculation a problem? Tell me, is equal to NPV. Can I go ahead? Tell me. Yes, Now, sir. after this, right, the inflation rate applicable to the project, I'm saying, to the project, that is what? Now, see, you did all this and you found out that, sir, your project, you have what? Found the NPV, that is okay, but we forgot to put up the inflation rate. Now, tell me, is inflation a reality? Tell me. A lot of you ask me, sir, what is inflation? Right? I give a very simple answer. Correct? You have an ice cream. Correct or not? See, I can tell you a very good example. Right? Ice cream I used to have when I was a kid. Right? 3 rupees, 4 rupees, 5 rupees. Now, do you get 4 rupees, 5 rupees ice cream at all? Tell me. 2007, 8 I'm talking about. Right? When I was probably in my 8th or 9th standard. Correct? At that time, ice cream was available for 4 rupees, 5 rupees. Now, can you even have a wrapper of ice cream at 5 rupees? Tell me. Minimum 40, 50 rupees? Bolo, bolo. 10 rupees to minimum ice cream is there. The worst of the worst. Ekdam chotu ice cream. Correct or not? Tell me. So, inflation is nothing but the value of money falling. Correct or not? Sir, first 20 years ago in 100 rupees we could have a meal. Now in 100 rupees, is it possible to have a full meal like we had 20 years ago? Not possible. Inflation is that phenomena that reduces the value of what? Tell me. Your money. Correct? And basically it may happen because of a lot of reasons. Sir, demand for goods increase, prices increase. Correct? Or it could be what? It could be demand pull inflation, right? Or cost push inflation. Sir, everything becomes one rate increases. Now see, do you know what is the cyclical system of inflation? How does the government use inflation, right? Or use only one component, correct? Only one component. Okay. Only one component, right? No issues, Karthik. Okay. Only one component that can, or one commodity whose price can be changed, which will lead to basically the whole economy facing inflation. Do you know that one commodity? Tell me. What is that one commodity? Bolo, bolo. Yaad karo. Tell me. One commodity whose price changes, okay, the whole economy is affected. Think about it. What is that one commodity?
that the government uses? Socho. Think about it. One commodity where even if you go to a local eatery, he will say, "Arey, this commodity ka rate increase na, so we increase the rate." You go to some what eatery gaya, yeah, some classes, "Arey, the rates have increased." Correct. Some general store also, if you go, he will say, "Arey, this rate of this commodity has increased, no, so we increase prices." Think about it. कौन सा commodity am I talking about? Tell me. Which is the single contributor? Tell me. बोलो. क्रूड ऑयल, पेट्रोल. अभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अवर व्हाट? टेल मी. होम बेस्ड व्हाट? एलपीजी cylinders. Tell me. Gas lines, LPG cylinders, all those things. Tell me, whenever government does not have to do a lot, right? It just has to increase the rate of what? Either a petrol or a diesel or any fuel that is required to transport goods and services, right? If that is increased, the whole economy will what? Tell me. Respond to it and rates will increase. Am I on the right track? Tell me. What do you say, Kushal? You will see, if you go to a vada pav vendor or an idli wala, right, on the road, and 10 rupees ka he has done 12 rupees, you ask him, "Are yesterday petrol rate increased, no? So now all the raw materials have become what? Pricey." What do you say? Keshav, Atharva, what do you say? Correct. That is how it is. Cash and discounting rate. Correct. Now the inflation rate applicable to the project is 1.82%. Yeah, 1.828%. How much? 1.828. That means cash flow will also increase by 1.828%, and your discounting rate will also increase by 1.828%. Is everybody okay with it? Tell me. Now, how to, sir, inflate the cash flows? There are 2 or 3 methods. Aa jao. So, inflating the cash flows first. Inflating the cash flows. Sir, these are called what? These are real cash flows. These are called what? Real cash flows. What are these called? Real cash flows. Real. REAL. Real means what? Without inflation. Real or without inflation cash flows. Sir, now what we are going to do? From real cash flows, we are going to go to nominal cash flows or money cash flows. How do you go there? Sir, we will put up a inflation factor. How do you put a inflation factor? Tell me, today's 15,000 spent, is it 15,000 only today? Or you have to inflate it at today's value also? Bolo. Today's 15,000. Are you going to say, "Arey sir, abhi inflation है 15,000 नहीं होगी 15,300"? Tell me. Will you do like that? सोचो जरा. No. No. That means today's 15,000 will be 15,000 only. Tell me. So, sir, inflation factor for year 0 is 1. But, sir, first year cash flow that is expected after 1 year, I think as per today's terms, it will be 4,500. But, sir, inflation of 1.82% has to be added, no, sir? Correct. So, how will I add it? Sir, this into 1.082. Sorry, 1.01828. Correct. So, how much will be the cash flow? Net cash flow. Now I am saying net cash flows nominal. Yeah, better. See, I'll write here in a better way. Can I write real net cash flows? Tell me. Converting to nominal net cash flows. Right? So, sir, this 15,000 will to remain 15,000 only today. But, sir, this 4,500 will grow by 1.828%, right? And will become how much? 4582.26. Anyone having any problem with this? Now is the time to ask me. Tell me. This, if you are okay, tell me yes or no. Now the next question for you, correct? Sir, this second year cash flow, no, sir, will it grow only once by the same 1.01828%? Or, sir, will it grow twice? That is, sir, see, inflation 1.82% is per 828% is per annum, sir. 4,500 may it will have an impact only once, but 6,500 may it will have impact twice.
What do you think? Only once? That is, will it only 6,500 will also grow by 1.828%, or will it grow by 1.828 square? Tell me. Square. Everybody. What do you say, Shobit? क्या लगता है? Square or only once? No, sir, square. Square. Or I could say, sir, this is an expected cash flow after 2 years. It will have impact of inflation twice, because inflation by that time 1.828% is per annum, sir. It will have a twice impact on the value. Correct. So you could do what, sir? 1.01828 raised to 2. Correct. So, sir, this into this then will give me the nominal net present or nominal net cash flows of 6739.81. Have a look. Are you okay with it? Then either 3 wala part, tell me how to do it. Bolo. Will it be 1.018282 raised to how much? Tell me. 828 raised to how much? Bolo, bolo. Bolo, 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 bolo. 1.01828 raised to what? Tell me. 2 or 3 or 1? What do you say, Keshav? Bolo, bolo. Acharva? 1, 2 or 3? Tell me. 3. Correct. And then at the end, 1.01828 raised to 4. Correct. So what I will do this into this. Are you okay with the concept of nominal or money cash flows? Tell me. इसको money cash flows भी बोलते हैं. So if I want to write what? Here in the notes, can I say that if you want to go from, or below here I will write. Correct. Either. Chalo either. Real cash flows to nominal cash flows. How will I go? Tell me. Multiply by what? Inflation factor. ठीक है क्या? Have a look. Not a lot of books use inflation factor terminology, but I like to use inflation factor terminology. It gives a bit of what? Structure to all the things that we are doing. Correct? Okay with this? Now, sir, you are saying discounting rate also will face the phenomena of what? Tell me. Inflation. Right? Now tell me, this discounting rate will face the inflation phenomena once, twice, thrice, 4 times or 5 times, or whatever, 4 years. So 4 times will it bear it, or only once? Tell me. Once. Only कितना once? Tell me. But मेरे को एक बोलो, is there a known formula? Sir, 10% है ना? Correct. Increase it by 1.82%. यानी कितना होगा? 11.82%. Can you simply, whenever we are doing compounding, can you simply add the percentages and get an answer? Honestly tell me. No, sir. ऐसा परसेंटेज ऐड करके आंसर मिलेगा क्या? शोभित क्या लगता है, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट मेथड यूज कर सकते हैं क्या? टेल मी. नो. सो टू inflate the discounting rate, we use what? Tell me. We use the which method? बोलो बोलो. एक फिशर मेथड मालूम है? फिशर मेथड. What is the method all about, sir? 1 plus discounting rate multiplied by 1 plus inflation rate gives you what? Tell me. या ऐसा बोलूं क्या? 1 plus real discounting rate, that is before inflation, plus 1 plus inflation rate, plus नहीं, multiplied by 1 plus inflation rate gives you what, Baba? Tell me. 1 plus nominal rate. 1 plus nominal rate. Correct. Have a look. Nominal discounting rate. Right. Everybody okay with this? Tell me. Fisher formula. Anyone having any problem with the Fisher formula? Bolo. We have done this in what? FM as well. Correct. तो चलो quickly. What is our 1 plus real rate? Real rate. Old rate कितना था? Tell me. 1 plus 0.10. बराबर है क्या? Multiplied by 1 plus inflation कितना है? Tell me. 1 plus 0 point कितना करूं? 0.01828 करूं या 0.1828 करूं? Tell me. See, all these small things are going to have a big impact in your exam. चलो निकालो कितना आता है? How much does it come to? 1 plus something? Yeah, 1 point something. What is the answer? बोलो बोलो. 1.12018. 1
2, Yes. 0, 1. Correct? Yes. That is right. If I have to ask you what is the, so if I deduct 1 from this, correct? 1.1201 में से 1 deduct करूँ, so will I get the discounting rate of how much? 0.1201. That is how much? 12%. बोलो बराबर है क्या? बोलो. So if I discount by 12%, so what is my nominal discounting rate? Tell me. 12%. Right? So write down here a real discounting rate to nominal discounting rate. What is the method? Tell me. What method do we use? Fisher effect. But how do we do it? Tell me. 1 plus real discounting rate multiplied by what? Tell me. 1 plus inflation rate is equal to 1 plus nominal discounting rate. Correct again. Therefore, if I have to write a direct formula, nominal discounting rate is equal to 1 plus real rate into 1 plus inflation rate. The whole minus 1 करोगे, so will you get direct answer? Tell me. This minus 1 of nominal rate goes there, plus 1 of nominal rate goes here, it becomes a 1 minus. चलू क्या रे? Everybody okay? Tell me. Or no? Can I go ahead? Kanishka, what do you say? Rupali, okay with it? FM stuff? Tell me. Okay. Single rate inflation. Chalo, do the calculation here. Now, can we find NPV at 12% on nominal net cash flow? Chalo, do it. How much is the what? Tell me. NPV at 12%. Correct. You could use 12.01% as well. I don't have a problem. Comma. Any full value, right? These cash flows 0 to 4 or 1 to 4? Tell me. 1 to 4 plus the 15,000. देखो almost similar to this NPV. Tell me. The old NPV. Same ही आता है, right? Have a look. If you increase the number 12.01 के आगे अगर कुछ करोगे, so it will come ditto same. Same. Correct? Same. Is it coming same? Tell me. Double one, double two. If you remove the what points. So in single rate inflation method, what happens? Real NPV. देखो ये क्या है? This is real NPV at 10% with a real cash flow. Correct? और ये क्या है बाबा? Real है या nominal? Tell me. This is nominal NPV. Right? At 12% on nominal net cash flow. Okay with it? बोलो. So here real NPV will be equal to what? Nominal NPV. चलो आगे बढ़ो. Tell me. But honestly tell me, at AFM level, will this ever be asked in exam? Never ever in your life. Correct? Single rate inflation तो एक भी क्वेश्चन में नहीं है. I have seen over 100 questions of AFM. Single rate inflation method तो किधर भी नहीं है, right? But can we do multiple inflation rate method? What do you mean by multiple inflation rate method? Or as it is called specific inflation rate method? Chal, multiple inflation rate or specific inflation rate method. Can we go to that? Hey, are you okay with single inflation? Bolo bolo. So I'm getting 1125.6. 1125. Yes. 1125 कैसे क्या? आपने 12% किया होगा. I did 12.1 ना. हाँ तो इसलिए. But has to be same only. Use 12.01. 2 decimal points तक तो at least use it. So you'll get the same answer. रूपल मैडम क्या लगता है? Single inflation rate method okay है? Got it. Yes, sir. Right? हाँ, now this inflation factor also can you find by two methods? Have a look. Huh? This is method 1. I did raised to 2, raised to 3, raised to 4. Correct? Can you do by this method also? Have a look. Huh? Easier method 1.
then is equal to left में this into 1.01828, correct? And then if I copy paste it, same है क्या? This is method 2. Have a look. You want to give it a try? देखो we will do 1 or 2 questions, उसमें you can give it a try. Sir, left into 1, जैसे हम लोग we do discounting factor divide, I am doing multiply because inflation is going to increase the cash flows, so multiply. This you can try once we go into multiple inflation or specific inflation rate method. चलो, I want Sir? to, हाँ बोलो In बोलो. this case, if we need to deflate the cash flows, what will be the process? डिफ्लेशन का इधर कुछ है नहीं, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल एट एएफएम लेवल. आप एफएम लेवल का बात कर रहे हैं, राइट? हाँ. नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल एट एएफएम लेवल. जो एएफएम लेवल पे रिक्वायर्ड है, आई विल टेक दैट, करेक्ट? हाँ, मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट मेथड इज समथिंग that is very important at what AFM level. If you don't understand this, correct, आगे कुछ भी नहीं आएगा, right? Sure. Then can I go ahead? Tell me. एक minute. Let me take one question sheet that I have made. एक question है from your study hub, correct, which will help us what during our process of NPV, correct? अभी we are doing what? Multiple inflation rate method. आ जाओ. Can you see the question? Tell me. Is the question visible to you? ए बाबा, क्वेश्चन विजिबल है बाबा? टेल मी. हाँ, प्रॉपरली विजिबल फॉर हर्स्ट कंपनी. देखो जरा एवरीबॉडी, इज इट विजिबल? Yes, sir. चलो आ जाओ. द फॉलोइंग एग्जिबिट्स प्रोवाइड, ठीक है. एग्जिबिट 1, Furnace company is a manufacturer of mobile communication technology. It is about to launch a new communication device, the Milan, which its directors believe is both more technologically advanced and easier to use than devices currently offered by its rivals. No tension, correct? Project Milan, the Milan will require a major investment in facilities. Furnace company's directors believe that this can take place very quickly and production be started almost immediately. Furnace company expects to sell 132,500 units of the Milan in first year. First year, what is the sale? Tell me. 132,500. Sale volume is expected to increase by 20% in year 2 and 30% in year 3 and then be the same in year 4 as year 3. Means what? Will it increase by 30%? Yes, sale of year 3, right? Will be there. Tell me. Same sales. What will happen? Tell me. Same 30% sales or same? in year 4 as year 3. Yes, okay. As the product reaches the end of its useful life. The initial selling price is expected to be $100 per unit before increasing with the rate of inflation annually. That means this $100 per unit, right, is 1 minute 0 year inflation or 0 year selling price or first year selling price. Read the question. Year 1 selling price. Year 1 selling price. So inflation applies from year 2 or year 1? Year 2. अभी इधर प्रॉब्लम क्या है? टेल मी. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज राइट डाउन बिलो हियर इन योर नोट्स, करेक्ट? टाइमिंग ऑफ इन्फ्लेशन, करेक्ट? वर्ड यूज होता है टाइमिंग ऑफ इन्फ्लेशन में, करेक्ट? इफ दे से दैट करंट टर्म्स, व्हेनेवर दे यूज, राइट, कि सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आर in current terms, matlab 0 year terms. What is it? Tell me. 0 year terms, right? But if I say selling price, variable cost or whatever fixed cost are in first year terms, हाँ, 0 year terms है तो inflation will apply from first year or second year. 0 year terms, inflation applies from first year और मतलब ये जो क्वेश्चन था that we did right now in Excel, correct? एक मिनट, this one, was it a 0 year terms question or a first year terms question? 0 year. 0 year. Why 0 year? शोभित क्या लगता है? Why 0 year बेटा? Inflation we applied from which year बेटा?
Year 1. Year 1, that means, sir, all the cash flows. Here I can say real cash flow without inflation cash flow, or I can say cash flow in current terms. बराबर है क्या? Right, that is 0 year terms. बराबर है, देख लो. Right, but here tell me 0 year terms means inflation applies from which year? From first year. Correct, देखो. ओके क्या? एंड इफ इट इज आर इन फर्स्ट ईयर टर्म्स, ऐसा लिखो फर्स्ट ईयर टर्म्स, या उसका एक और वर्ड जो यूज होता है, करेक्ट, वन मोर ईयर और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, ऐसा भी वर्ड यूज हुआ इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ईयर 1 ऐसा हो तो व्हाट? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस तो नहीं, बट एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वॉट एवर इट इज, in year 1, that is first year terms. That means inflation कब अप्लाई होगा बाबा? टेल मी. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर? Second. अप्लाइज फ्रॉम सेकेंड ईयर. ठीक है, चल. नाउ कैन वी डू एटलीस्ट सेल्स का जो है उतना वर्किंग नोट एंड इन्फ्लेशन कैन वी डू फ्रॉम फर्निश्ड कंपनी? प्लीज राइट दिस डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. राइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आगे बिजनेस वैल्यूएशन, आगे फॉरेन एनपीवी, आगे नॉर्मल एनपीवी, एपीवी, राइट, all these 3 major chapters of your syllabus, correct, need to have, you need to have a knowledge of this. Correct, ये knowledge नहीं होगा, very difficult for you to cope up with things. Correct, चलो क्या आगे? Tell me. Right, what I'll do is, wait a second, I'll do Fernhurst company here. हाँ, I'll give you the note. Can I give you the, एक मिनट, Fernhurst company से ये सेंड कर दूं क्या? टेल मी इन द ग्रुप, और अभी ये देख लो, इन द ब्रेक आई सेंड इट, चलेगा? देन यू कैन आफ्टर द ब्रेक कीप इट विथ यू. चलो आ जाओ. फर्नेस्ट कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेल 130 to 500. नाउ व्हाट आई विल डू, वेट, अपने को फर्नेस्ट कंपनी वी हैव टू सॉल्व टुडे, टुडे या टुमारो पूरा ही सॉल्व करना है. राइट, कैन वी डू फर्नेस्ट कंपनी बाय इनडायरेक्ट मेथड? टेल मी. एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं. चलो, व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस. You also have this, you also make furnished company and copy the indirect method का what format. चल आ जाओ. Sales I will say working note 1. Solve it with me. Sales working note 1. Right? चलो आ जाओ. चलते क्या? वर्किंग नोट 1. इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, एटलीस्ट डू द वर्किंग नोट विथ मी. बाकी कुछ मत करो. फर्नेस्ट कंपनी घर पे कर लेना. करेक्ट, आई विल गिव यू होमवर्क. राइट, वर्किंग नोट 1 सेल्स. करेक्ट. हाँ, here also in inflation I will say multiple inflation and method. Right, refer Fernhurst company for example. ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही इधर से ही लेते ना, फर्नेस्ट कंपनी से. ओके, आ जाओ. नाउ कम टू दिस पार्ट. फर्नेस्ट कंपनी, चलो, कैन वी रीड इट? आ जाओ. एक्सपेक्ट टू सेल 132,500 यूनिट्स, आराम से. करेक्ट, आ जाओ. करेक्ट. हाँ, नाउ पहले पहले एक मिनट. First, you should decide when you start a question, okay, that boss whether dollar thousands, dollar millions, क्या करना वो you have to decide, right? अभी have a look, everything is given in what?
dollars fully, ये देखो इधर fixed cost full dollars में given, tell me if full dollars given you also use full dollars, correct, but 130 to 500 into 100 होगा, तो will your amount be very big, tell me, will your amount be very big? Yes. So what to use, tell me? $1 million. डॉलर मिलियन यूज करो या डॉलर थाउजेंड इज द मोस्ट सेफेस्ट बाय, आपको जो यूज करना है आउट ऑफ द टू यू कुड यूज एनीथिंग, टेल मी अल्बाइना व्हाट टू यूज, कनिष्का डॉलर या डॉलर थाउजेंड्स या डॉलर मिलियंस, टेल मी Dollar thousands, sir. थाउजेंड्स, डॉलर थाउजेंड्स इज अ सेफ बाय, करेक्ट, so I'll do what 5 years I'll do because 4 years का data given, amount in dollar thousand, correct. Hey, will you be comfortable straight away doing by direct method or you want me to do by direct indirect method? Sorry, direct method से करूँ पहले फिर indirect से करूँ? Tell me. You tell me what to do. चलो पहले sales units तो लिख लो. Sir, will it not depend on the question whether depreciation values are given or not? हाँ अभी ये भी एक क्वेश्चन है, अब डेप्रिसिएशन दी है क्या नहीं है, बट जनरली विल द डेप्रिसिएशन हैव अ लुक हियर, इज द डेप्रिसिएशन गिवन टू यू, अभी आप कैसे करो वो आप पे डिपेंड है, बराबर है ना, टेल मी. Correct. अभी ये देखो ये क्वेश्चन एनुअल रेट राइट 25%, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन 20%, कैसे भी करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट, मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं सर एग्जाम कोई में भी भी, यूज या कर फिर सकते यार. देन वी कैन स्टिक टू वन मेथड फ्रॉम द बिगिनिंग. अभी अभी मेरे हिसाब से डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन करके वी विल स्विच टू इनडायरेक्ट मेथड, बराबर है. देन फिर बाकी सब क्वेश्चंस के लिए एक मेथड यूज कर तो यस चलेगा. इनडायरेक्ट, बिकॉज सी व्हेन यू गो टू दिस नो फॉरेन एनपीवी उसमें इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है, सो आई एम सेइंग कि इनडायरेक्ट का आदत लगाना जरूरी है, बट एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करना भी उतना ही जरूरी है फॉर जस्ट गेटिंग अ बेस कि दोनों क्वेश्चन कैसे करने हैं बाय बोथ द मेथड्स, राइट. तो व्हाट आई विल डू इज, सुनो इनडायरेक्ट मेथड से ये मैं करता हूं, आप डायरेक्ट मेथड से होमवर्क में करके ला सकते हो, या हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे राइट एट दैट टाइम वी विल डू बाय डायरेक्ट मेथड, वीक में करना है ना राइट, तभी एक आधा डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी यही विद डायरेक्ट मेथड, करेक्ट. चलो आ जाओ सेल्स यूनिट 130 to 500, हाँ आराम से 130 to 500 इंक्रीज बाय व्हाट, टेल मी 20% इन ईयर 2, तो दिस इनटू व्हाट, टेल मी 20% से इंक्रीज बताना है, तो कैन आई डू दिस इनटू 1.2, विल यू बी ओके विथ इट. तो हाउ मेनी यूनिट्स सेकेंड ईयर में सेल्स यूनिट्स बोलो. 159,000. 159,000, एवरीवन ओके विद दिस. एंड इन थर्ड ईयर दिस इनटू 1.3 बोल रहा है वो, दैट मीन्स 30% इंक्रीज, 30% इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय 1/3, हाउ मच इज दैट बोलो. 206,700. राइट नाउ इज इट, देखो हाँ पढ़ो जरा, इज इट 130 to 500 प्लस 20 एंड देन सेकेंड ईयर का इंक्रीज बाय 30, और इज इट फर्स्ट ईयर का इंक्रीज टू 30%? हैव आई पुट अ डाउट इन योर ब्रेन, टेल मी. रीड इट once again, टेल मी क्या लगता है एवरीबॉडी. फर्स्ट ईयर का इंक्रीज इन थर्ड ईयर लाइक फर्स्ट ईयर का 30%. इंक्रीज इन थर्ड ईयर, No, 30%. sir. In year 2, the sales are 159,000, and over that 30% will increase. ओवर दैट 30% विल इंक्रीज, एवरीबॉडी इज ओके, या 130 to 500 इंटू 30% इन थर्ड ईयर, वो पूछ रहा हूं मैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने किया, सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हैव अ लुक, दिस इज तो ओके, दिस इनटू 1.2 इज आल्सो ओके, बट इज इट दिस इनटू 1.3 और दिस इनटू 1.2? मेरा क्वेश्चन हुआ है आपको. देखो रीडिंग पे आपको एट द रीडिंग स्टेज
Is it still not very clear what to do? Even what I'm asking you, right? Fourth year के लिए, is it first option this into 1.3, that is growth rate is same, correct? Or is it this is equal to this, that is third year का sale is equal to fourth year का sale? That's what I'm trying to ask you. समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ? एकदम ही बेसिक इंग्लिश चैलेंज कर रहा हूँ. आई एम चैलेंजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश. और ये दूर का सम नहीं, स्टडी हब का क्वेश्चन है. क्या लगता है? देखो, दिस आई विल पेस्ट हियर. क्या करूं बोलो? Per year 2 into 40%. Year 2 into 30%. Everybody okay with this? Or anybody wants to fight me on that? Tell me. बोलो. और फोर्थ ईयर का क्या? सेम एज दिस 206700 ही होगा. ये देखो क्वेश्चन अच्छा है. डोंट डिनाई द फैक्ट, राइट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्या? टेल मी. Is it there are chances that you could have missed this? अगर if I had not gone in detail, बोलो. Yes. What do you say, रूपाली? क्या लगता है रूपाल मैडम? कंफ्यूज्ड? हाँ सर. बराबर है. अब एग्जाम में आ बराबर. गए, क्या करोगे? इंटरप्रिटेशन तो यू विल हैव टू डू. देखो इतने छोटे इंटरप्रिटेशन पे ना एग्जाम में क्वेश्चन जाता है. आपको लगता है इतना क्या है, छोटा बात बता रहा है ये है आदमी, करेक्ट? मैं आपको बोल रहा हूँ इसी पे 49 और 51 की जर्नी डिपेंडेंट है. या तो आपको 49 आते या तो 51 आते. एनालिसिस करोगे ही नहीं, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. करेक्ट है. चलो ना, वील गो टू व्हाट? स्टडी अप. मैंने ओपन किया है स्टडी अप, राइट? सी वेदर वी कैन व्हाट गेज दिस, राइट? आ जाओ जरा. दिख रहा है कि स्टडी अप देखो जरा. और दिस इज व्हाट एसीसी इंटरप्रिटेशन, मेरे मन का नहीं है, ठीक है? आ जाओ. एसीसी के ही इसका क्वेश्चन है क्या? फॉरनर्स कंपनी, यू हैव इट इन योर व्हाट? टेल मी. बुक में भी है आपके, कैप्लन के बुक में. आ जाओ जरा, आंसर इसको प्लान करते हैं. बोलो. चलो जरा रेवेन्यू के वर्किंग नोट पे चलो. हाँ ये रहा देखो. हैव अ लुक. into 1.2 into 1.2 into 1.3, and is it same in this year? Tell me. So what should I do? What does this say? Into 1.2, correct? फिर into 1.2 into 1.3 means what? Tell me. Over and above the second year more 30%, and it is same in fourth year. यानी सर बोलना क्या चाहते हो? करेक्ट. दिस ऊपर जो है ना वो सही ऑप्शन है. That means this 20% will then grow by 30% and it will be same in fourth year. बराबर है क्या? Tell me. Make sense? बोलो. Are you okay with it? Now are you okay with the interpretation? Tell me. कोई So प्रॉब्लम है how बेटा will इंटरप्रिटेशन? how will they frame the sentence if they want us to interpret it like the हाँ, rate will so be it will say sales volume is expected to increase by 20% of first year sales, right? In year 2 and 30% of first year sales in year 3. Yeah, of the sales of first year, yeah, initial sales. okay. And then be same like year 1 sales. वो लिखना पड़ेगा properly. If nothing given, then your compounding brain is the base brain that you have to use. Correct? And then be the same. यानी sales volume देखो, इसको delete कर दो. Sales volume
देन बी द सेम, इतना डिलीट कर दिया अगर मैंने तो क्या आएगा, देन बी द सेम इन ईयर 4 एज ईयर 3। अरे तो सर ईयर 3 का सेल कितना है, ये 30% जो इंक्रीज होकर आया फ्रॉम सेकेंड ईयर के 20%। अब थोड़ा थोड़ा अब क्या है, सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% इन ईयर 2, राइट राइट, and 30% in year 3, and then be the same in year 4 as year 3 as the product reaches the end of the useful life, correct? ऐसा है देखो, If they want us to interpret that year 4 में जो growth rate है that is the same as year 3 year 3 में, हाँ तो right, and then growing by the same rate in year 4 as year 3, बराबर है ना? correct एवरीबॉडी ओके? देखो ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, बट आई नीड ऑल दिस, करेक्ट? इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे क्या? टेल मी, बोलो बोलो, विल यू बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट दिस? नहीं कर पाओगे, राइट? वेरी डिफिकल्ट। और ये मैंने खुद फेस किया, दिस आई हैव फेस्ड इन माय ओन स्टूडेंट जर्नी, करेक्ट? चलो ओके। उसके बाद सेलिंग प्राइस, कतरा से सेलिंग प्राइस, टेल मी। फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज हाउ मच, टेल मी? 100। Now tell me, will any inflation factor apply here? First year, will the inflation apply from second year or will it apply from first year only? Tell me. Second year. Second year. So this will grow every year by what percentage? आ जाओ जरा नीचे, is the inflation rate given to you? आ जाओ जरा, is the inflation rate given to you? दिया है क्या ऊपर इधर? Balancing adjustment 16 million. Rising by the inflation rate subsequent annually. ये है ना expected in furnished companies 4% in year 1 and 5% in year 2 to 4. तो क्या अप्लाई करूं, 4% अप्लाई करूं या 5% अप्लाई करूं? टेल मी। 5 डू वी नीड फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन और सेकंड टू फोर्थ ईयर इन्फ्लेशन? टेल मी। second to fourth year inflation Second to fourth year. So 5%. Fourth this year. into what should I do? This into what? 1.05, correct? So first year का 105, then second year का how much will it be? Tell me. This 105 growing by more 5%, correct? And sir third year say fourth year में again 1.0. Are you okay with this? Sir can you do by inflation factor? ये method 1 हो गया, ये shortcut method है, right? Sir what is method 2? आ जाओ, selling price. The method 2 is something like this. Sir every year 100 लिख दो, correct? And then I put up inflation factor, right? Inflation factor will apply from second year. So sir this into 1.05, right? Like this, and then selling price after inflation. Eventually आपको method 1 पे जाना है, correct? This into, are you understanding what I'm doing? This is method 2. देखो, you could break it up, sir. Every year it is 100. First year it is 100. After that also 100, and multiply by the inflation factor and get 105, 110.25, 115.72. Eventually you have to settle down to method 1. ऐसा करना पड़ेगा. But for understanding you need this. Okay है क्या? Have a look. कोई problem? Can I go ahead? Both the methods okay? Just check once. चलो आगे. Now tell me how much is the sales in dollar thousands. बोलो. This 130 to 500 into this selling price after inflation. बराबर है ना? This is only sales dollar in thousands. ये dollar in thousand है क्या रे? या ये full dollars है? Tell me. क्या है ये? Tell me. What is this? What is this? What is this? Should I divide this by 1000? Tell me. Divide by 1000. Correct. Have a look. All the 4 years sale. Are you okay with it? चलो आगे फिर. Tell me. Sales in dollar thousands. Method 1, method 2. Sales हो गया. चलो let's update sales here.
तो आपने 1000 से डिवाइड किया 100 से डिवाइड किया 1000 से 100 से, देखो जरा, हाँ 1000 से किया 13250. ओके विद इट. कार्तिक, व्हाट डू यू से? अल्बाइना बेटा, ओके, टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Then method 1, method 2. अभी चलो, now stick to that method 1 या method 2, whatever you want to stick. Correct. Now see, every working note you can copy paste what? The heading. Working note 2, variable costs. Correct. Come to the question again. आ जाओ, variable costs. Right. आ जाओ variable cost में. Tell me. The variable cost of each unit is expected to be 43.68 in year 1. Right. Expected to be means, is it after inflation of year 1 or before inflation? Tell me. In year 1, after inflation. Yani inflation will apply from first year or second year? Tell me. Bolo. सेकंड ईयर Second year. So rising by the rate of inflation in subsequent years annually. ठीक है. चल. So 1 minute. Again I will require sales units here. I have already the sales units written up here. Correct. Now sir, please do method 1 से variable costs. Variable costs या method 2 से करता हूँ. Right. मेथड 2 से वेरिएबल कॉस्ट बिफोर इन्फ्लेशन कितना है? एवरी ईयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर कितना है? वो 43.68. सो व्हाट आई विल डू, कॉपी दिस फॉर ऑल 4 ईयर्स. करेक्ट. बट सर इन्फ्लेशन फैक्टर अप्लाई करेगा ना, एट व्हाट रेट? 5%. करेक्ट. सर फर्स्ट ईयर इट इज 1 एंड इन्फ्लेशन विल अप्लाई फ्रॉम सेकेंड ईयर. करेक्ट. सेकेंड, थर्ड, राइट. देन कैन आई से वेरिएबल कॉस्ट्स आफ्टर इन्फ्लेशन? खतरा से, tell me, this into this, right? This is method 2 again, right? ये मेथड 2 है. मेथड 1 से कैसा करते रहे? टेल मी, गाइड मी थ्रू मेथड 2. बोलो. डायरेक्टली बाय मेथड 2 कैसा करते? सर देखो 43.68 इन ईयर 1. व्हाट टू डू इन सेकेंड ईयर? टेल मी. सेकेंड ईयर it will grow by 5%. How to do it? This multiplied by something 1.05. Correct. Copy paste left into 1.05. This is raised to 1, raised to 2, raised to 3. Okay with it? This is method 1. Am I okay with both the methods? Are you okay with both the methods? चलो आगे. So can you repeat the last method? This one. Yeah. Okay. See what I am doing. This is what, sir, apply inflation once. This into 1.05 raised to 1. Correct. Sir, then this into 1.05 raised to 2. Sir, then this into 1.05 raised to 3. Or sir, I could have done this what? Tell me. This into 1.05. Every year it applies. Copy paste. Left into 1 point. This is the same thing. Have a look. Okay with it? Method 3 भी बोल सकते हो. करेक्ट. या ये मेथड 3 हो सकती है, ये मेथड 1 हो सकती है. देखो, have a look. I'll show the formulas here. Is it the same thing? देखो जरा, 43.68 करेक्ट इंटू 1.05 रेस टू 1 और 43.68 इंटू 1.05 स्क्वायर. या मैं करूँ जो भी आपने 43.15 किया इंटू 1.05, दैट ऑल्सो वर्क्स. See whether this is okay. What do you say, Kanishka? Tell me. Okay with it? Who asked the doubt? अभी कनिष्का ही नहीं पूछा ना? Yes. Understood. Okay with it? Understood? Okay with it? Have a look.
चलो, then I will say variable cost in total, right? So 132,500. Variable cost in dollar thousands, Baba. Correct. So what should I do? 132,500 into 43.68. हो गया ना? This is the variable cost. Or what should I do? बोलो. Divide Will it by be 1,000. divided by 1,000? Correct. And then copy paste. Once if you give a formula in one cell correctly, then copy paste will not be a problem. But till you don't give a perfect formula here, correct? Don't copy paste it ahead. Check it twice and then give the formula and then copy paste it. चलो, then आ जाओ, variable cost इधर ऊपर आ जाएगा. Variable cost should I put in positive or negative? Tell me. क्या करूं? Negative. Negative में it is an outflow. Put it in negative. बराबर है क्या? Reference. Then we can calculate contribution here. This is contribution. देख लो. So can Then you can just you go show to the variable cost working? sorry? Variable cost working. Yes. Yeah. What you want to formula? एक 3 मेथड से किया है, but I am going to not use it 3 times. Only one out of the 3 I am using. Okay. No, I just missed the stuff. हाँ. Got it. ठीक है क्या? Yes. कनिष्का, what do you say बेटा? Okay. Understood, sir. Can I go ahead? Yes, sir. Sure. Then next is what? Fixed cost. Read it. Fixed costs are what? Expected to be 900,000 in year 1. Means what? After inflation, yani year 1 का price given to you. Correct? 900,000. Right? And rising by the rate of inflation in subsequent years annually. Subsequent years annually. कैसा करेंगे फिर? Tell me. 5% rate will apply from second year. चलो, fixed cost का working also we can do. अभी देखो, here also can you open it up nicely and do it, or you could do it shortcut से भी. Now see, basically inflation factor अगर apply करूँ तो fixed cost, correct? Every year fixed cost I am writing direct in dollar thousands. So should I write 900,000 or should I write only 900? Tell me. Right here, 900. 900. So 900 every year, sir. 900 for all 4 years. And inflation factor. Tell me, inflation factor will start from second year or first year? Tell me. इधर 1.05 डालू या इधर 1.05 डालू? 1.05 square this into 1.05 cube. Then fixed cost after inflation, correct? Sir, 900 तो same ही है because it is after inflation, but from second year inflation will apply. This is method 2, correct? But वही fixed cost after inflation if I have to do by method 1, easier method क्या है? This into what? 1.05. This is method 1. And what is method 3? Sir, 900. This into 1.05 raised to 1. Sir, this into 1.05 raised to 2. And this into 1.05 raised to 3. Have a look. क्या बोलती जनता? All the 3 methods. Which is the simplest of them all? Tell me. 1, 2 या 3? Huh? 1. 1. What do you say? Rupali, what do you say? 1. 1. Roshan, what do you say? Oh, sir, 1. 1. ठीक है, देखो. But are you open to using anything in exam? Or you should be open to using anything in exam? Why not? Correct. Now, can I do one extra question? Maybe not related to furnace at all. Correct. एक extra question लिखो ना. Company A has 15,000 sales for 4 years. Correct. And has selling price in current terms as 10 in year 1, यानी $10 लिखो,
$15 in year 2, $20 in year 3, and $30 in year 4. Inflation on selling price is 4% per annum. Calculate sales in dollars for 4 years. चलो, how to do this? Amount in dollars बोला. This is a very good question. What are the sales every year? Tell me. Sales every 15,000. year 15,000 for 4 years. इसका मेरे को टेंशन नहीं. How much is the selling price before inflation? वो बताओ. 10, 15, 20, 30. From when will the inflation apply? First year or second year? First year. First year. तो अगर मेरे को इन्फ्लेशन फैक्टर डालना है तो व्हाट विल आई पुट अप? अगर मेथड 1 से जाओ तो फर्स्ट ईयर से इंटू 1.04 करूंगा. टेल मी. या फिर क्या ये इंक्रीज होगा एवरी ईयर अप टू 4th ईयर? This 10, 15, 20, 30, are they in today's terms or are they expected 1 or 2? But यही अगर मैं 1 मिनट, so tell me what is the SP after inflation? Tell me. This into this, Baba, tell me. ये okay क्या? 10, 15 into 15 twice, 20 thrice and 30 4 times. Are you okay with this? Yes. तो selling price after inflation done. उसके बाद sales in dollar कितना होगा? This into 10.4, 15,000 into 10.4 and so on, whatever. इसका मेरे को कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है. बट इसमें अगर एक वर्ड चेंज करता, सिया, व्हाट वर्ड आई एम चेंजिंग इन दिस क्वेश्चन? जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन. And has expected selling price of 10, 15, 20 and $30 in whatever year 1, 2, 3, 4. Inflation on selling price is 4% per annum. तो आप इन्फ्लेट करते क्या सेलिंग प्राइस को? No, sir. अगर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस गिवन. No, sir. These are already inflated in this case. वही तो मैं बोल रहा हूँ. 1 मिनट. That means even if I give expected cash flows, so would they be inflated again? 1 मिनट. Can I go into one of the questions? ये क्वेश्चन वाली शीट है, करेक्ट? अपन करने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है? यस रोशन, टेल मी. सर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लिखा है तो सेकेंड ईयर से इन्फ्लेशन होगा ना? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड आपको सेलिंग प्राइस में 4 साल की दे दूं, मतलब इन्फ्लेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा? सर सेकेंड ईयर से होगा ना जो सेकेंड नोट्स ईयर से होगा. ऐसा बोला है क्या? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 1. मैं तो क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 1 इतना है, ईयर 2 इतना है, ईयर 3 इतना है, ईयर 4 इतना है. मतलब क्या? हैव आई टेकन इन्फ्लेशन फॉर ऑल? यस सर. बराबर है. ऐसे ही 1 मिनट, ये क्वेश्चन में आओ. एम्बरले कंपनी, रीड दिस. देखो, एक्सपेक्टेड बोलू या एस्टिमेटेड बोलू, बोथ हैव द सेम मीनिंग, करेक्ट? expected बोलो या estimated बोलो, means if I say expected or estimated selling price means inflation is already added or would you have to again add inflation? Tell me. बोलो. Already added. मतलब ये जो क्वेश्चन है एम्बरले कंपनी, राइट,
Amberley Company's finance director has prepared estimates of the post-tax cash flows for the project using a 4-year time horizon together with the realizable value at the end of year 4. Post-tax operating cash flows में क्या इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडेड है या नहीं है? बिकॉज इधर नीचे इन्फ्लेशन दिया हुआ है, ये देखो प्रेडिक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब शुड आई इंक्रीज द पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज और वॉट एवर इट इज, वॉट एवर वेरिएबल कम्स, if it is an estimate, would you again add inflation into it every year? No, sir. और अगर पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज दिए तो आपका क्वेश्चन, विल योर क्वेश्चन यूज द फुल फॉर्मेट और सर खाली इधर से करने का है, इतना ही करने का है सर? व्हाट डू यू से? डू यू हैव टू डू फुल क्वेश्चन और ओनली डू फ्रॉम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग कैपिटल? सर क्वेश्चन खत्म। पूरा क्वेश्चन करना है क्या? टेल मी। देखो ये ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू से व्हाट एस्टिमेट या ऐसा कुछ अगर आपको बोला, कमिंग बैक टू द व्हाट इशू एट हैंड, आर यू ओके विद द इशू? यानी अगर मैं एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस देता बॉस या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो देता तो विल इट बी ऑलवेज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन? वी हैव टू राइट अ नोट फॉर दिस, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू राइट। तो एक मिनट, एक सेकंड, तो इधर नीचे तो दिस आंसर वुड बी समथिंग लाइक दिस, डायरेक्ट दिस इनटू दिस। ये बराबर है क्या रे? आर वी ऑन द सेम ट्रैक? टेल मी, देख लो। आर यू नाउ ओके? रीड बोथ द क्वेश्चंस, डू दे मेक सेंस नाउ? यानी सर एक 0 ईयर होता है, एक ईयर 1 होता है और एक होता है एक्सपेक्टेड। एक 0 ईयर यानी करंट टर्म्स, एक ईयर 1 इन्फ्लेशन अप्लाइज फ्रॉम सेकेंड ईयर, एंड सर थर्ड होता है जहां पे एक्सपेक्टेड दे दिया, इन्फ्लेशन दिया है बट एक्सपेक्टेड दिया है। So expected or estimated given, then can you add inflation again? Honestly tell me. No, sir. Very important. क्या लगता है रूपल मैडम, ये लेवल का एनालिसिस किया then will AFM become easier for you? Tell me. Yes, sir. एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट इन द क्वेश्चन, इफ यू रीड इट रॉन्गली डायरेक्ट 45 से 49 के बीच में। नाउ आर यू ओके? नाउ आर यू गेटिंग अ फील? फील आ रहा है क्या? टेल मी। एक काम करूं, इसको इन्फ्लेशन के शीट में हिला दूं, चलेगा? यहां से निकाल देता हूं, इन्फ्लेशन में नीचे डाल देता हूं, करेक्ट, मल्टीपल इन्फ्लेशन में, राइट? ओके ना बाबा? टेल मी, सो दैट फर्नर्स कंपनी में गर्दी ना हो, करेक्ट? ओके विद इट? हाँ रोशन बोलो बेटा। सर अगर ईयर 2 से इन्फ्लेशन स्टार्ट करना होता तो क्या लिखा होता क्वेश्चन में? ये ना फर्नर्स का लिखा है ना बेटा, ये देखो, ये क्वेश्चन में लिखा है, देखो इधर क्या है, फर्नर्स, ऊपर आ जाओ, देखो बेटा फर्नर्स का रीड करो, क्या लिखा है? इनिशियल सेलिंग प्राइस इन विच ईयर? डायरेक्टली ईयर 1 सेलिंग प्राइस गिवन मींस व्हाट? टेल मी। और क्या लिखा है, वर्ड क्या है, बोलो। ईयर 1 इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, वर्ड एक्सपेक्टेड है क्या बेटा? यस सर। तो जहां जहां एक्सपेक्टेड बोला वहां वहां इन्फ्लेशन ऑलरेडी हो चुका है। मैंने क्या बोला, एक्सपेक्टेड में सारे कैश फ्लो दे दिए, सारे सेलिंग प्राइस दे दी, तो क्या हुआ बेसिकली? बराबर है। देखो जितना मेरे को मालूम है, एग्जाम में ना, आई टेल यू ऑनेस्टली, आई टेल यू राइट, आपके मार्क्स इसलिए नहीं जाएंगे कि सर आपको बिजनेस वैल्यूएशन, हाउ द मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है, या मेथड ऑफ फॉरेन एनपीवी में, या फॉरेन एनपीवी का फॉर्मेट नहीं आता, या कंसेप्ट नहीं आता। आपके मार्क इधर जाएंगे। आपको भी लगता है क्या कि इसको आपने हल्के में रीड किया, राइट, तो यू विल लूज मार्क्स? टेल मी। यस सर। राइट, ऐसा है। अब थोड़ा सा एक और, एक मिनट पहले ये लिख लो नोट, इधर नोट लिखते क्या, नोट्स के अंदर, राइट, नोट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखो. Whenever expected or estimated cash flow is given, cash flow or selling price or variable cost or fixed cost is given, you will always assume it to be adjusted for inflation or not adjusted for inflation. बोलो क्या लिखो. बोलो adjusted for inflation, not adjusted. Adjusted for inflation. Adjusted for inflation. Adjusted for inflation. This base, if it is strong, no, आगे no tension. सर पर सेल्स के वर्किंग नोट में तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया था ना. किसमें बेटा, कौन से वाले? सेल्स के वर्किंग नोट. सर इधर वर्किंग बेटा, नोट वन. ऊपर. हाँ, इधर ये वाले So we इसमें. didn't calculate. Yeah. हाँ, because it is So expected working for note year one. one. For year one बोला है ना, before increasing with the rate of inflation annually. Year one दे दिया, and then second year से inflation did we apply here? But when I say एक minute, right? When I say that it is expected or estimated selling price of each year, I am giving you. Here I gave only of first year, correct? And then second year say it would increase, right? Here I gave what? Current terms. Sir, as per today, I feel the prices will be so. So first year said inflation applies, right? So three variants. Sir, current terms and all what selling price is given, inflation will apply from first year selling price. Sir, expected or estimated all selling price is given, no inflation. Sir, first year selling price given, no inflation in first year, inflation applies on second year. क्या Sir, लगता है? can there be a case? नहीं, वो तेरे दिमाग में जो केस आ रहा है वो नहीं बनेगा. यही तीन है और पूरा बुक छान मार तू, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी. तीन ही केस है, ठीक है. करेक्ट. या तो सारे एस्टिमेटेड गिवन, करेक्ट, या तो 0 ईयर करंट टर्म्स गिवन. सो यू हैव टू लुक आउट फॉर द वर्ड्स. करंट टर्म्स बोला तो व्हाट शुड योर ब्रेन से? इन्फ्लेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस गिवन, एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इन्फ्लेशन विल अप्लाई फ्रॉम सेकंड ईयर. आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई भी बुक में से, कोई भी सोर्स से, यही इंटरप्रिटेशन है. ठीक है क्या? टेल मी. Kanishka, what do you say, beta? Now are you clear with whatever I said, all the three types? चलो आगे. Yes, sir. Have you written the note? चल. Now selling done, fixed cost भी होगा. एक मिनट. Fixed cost can we give? ये किधर कह रहे हैं? Fixed cost इधर. Sorry, हाँ. Fixed cost है ना रे? Can we give a reference of fixed cost? Negative fixed cost. हाँ. Can we have other cost? कुछ है क्या? देखो जरा. आ जाओ. Can we read ahead a bit? Then I'll give you a break. 2-3 minutes. 10:45 I'll give you a break. Sorry. थोड़ा सा 15 minutes लेट है, बट सुन लो. Initial investment in non-current asset is expected to be $16 million. Correct? $16 million. तो आ जाओ. $16 million I should write in initial investment. Do I have initial investment here? Tell me. हाँ, बोलो. Initial investment में 16 million is to be written. So negative 16 million I will write. No, like this. This is okay for me to write 16 million? Tell me. 16,000. 16,000 because what you are doing? Are you doing dollar thousands or dollar millions? Bolo. Dollar thousands. So 16 million, how will I write? Sir, this 16 million you have written is correct, but we want dollar thousand, so divide by 1,000. Everybody okay? Divide by 1,000. Tell me.
See, you are saying what this person is saying, but I have checked more than 100 to 200 students का paper, right? For AFM, right? This is the smallest of the smallest mistake that happens. You feel so confident, so overwhelmed कि ये mistake होता ही है, correct? चलो, then let's go ahead. आ जाओ. किधर था रे? हाँ, furnished company will also need the immediate investment. ठीक है, working capital, right? Working capital को 1 मिनट छोड़ दो, correct? Furnished company, हाँ, ये आ जाओ, right? Will also incur one-off marketing expenditure of 1.5 million post inflation. ए, क्या बोला है? आराम से पढ़ो. Read these 2 lines. Tell me where will marketing expenditure go? कुठे जाणार? किधर जाएगा? Other cost. किधर? Post Other cost inflation. में, right? And will you add inflation or not add inflation? Not add inflation. Not add inflation. Because it is post inflation. तो एक मिनट. Should I write it here in other cost? Where should I write? 0 year cost, no, it is. End of year 1. And it is saying tax allowable, means should I write before tax or after tax? Tax allowable means will it be a deductible expense? Tell me. Yes. तो इधर माइनस कितना लिखो? 1.5 million, no? करेक्ट, no? Divided by 1000. डिवाइड बाय 1000. वो मत भूलना बाबा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, राइट? ठीक है, ओके. Now there is what? Depreciation. Next अपना working note will be tax and depreciation. Correct? पहले depreciation कर लेते, then we'll go for tax. Correct? Okay क्या? Tell me. But after a short commercial break. Correct? चल आ जाओ. 10:45. Come back by 11:02 या 11:03 तक आ जाओ. ठीक है? 17-18 minutes break. Quickly come back by 11:03.
quickly come back guys. आ जाओ everybody okay with this? चलो come back everybody, quickly everybody back. So Kushal, Albina, Kanishka, Athar, Yes, sir. back. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So with एक सेकंड ना. चलो एवरीबॉडी बैक. चलो हो गया. चाय कॉफी बॉर्नविटा राइट, एवरीथिंग डन. पोहा पराठा whatever. क्या क्या करते हो रे नाश्ता? टेल मी. नो ब्रेकफास्ट? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट डू ब्रेकफास्ट? टेल मी. एनीवन हु डज नॉट डू ब्रेकफास्ट एट ऑल? ऐसा कोई है क्या? सर क्लासेस के टाइम पे होते हैं। नींद क्लासेस के आती है टाइम पे सर। क्या? नींद आती है. ओके, तो नहीं किया नाश्ता? यस सर। रोशन, रोशन तो अभी दिल्ली में है ना? दिल्ली में रोशन किया नाश्ता? रोशन, शोभित. शोभित किधर है? दिल्ली ना शोभित? कैसी है बारिश? बारिश कैसा है? इज इट रेनिंग देयर? नहीं. रूपल मैडम क्या नाश्ता किया? आ गए क्या? नो सर. हाँ अभी नो सर, नॉट रेनिंग. नॉट रेनिंग. बढ़िया है. क्या नाश्ता किया तूने? क्या नहीं अभी किया? तो कुछ भी नहीं किया. कुछ भी नहीं? क्यों? खाते नहीं हो गए तुम लोग मॉर्निंग में? भूख नहीं लगती? बनाना बनाना शेक एट ओके, मैक्स. बनाना शेक. फिर वो हेल्दी राइट मॉर्निंग में. चलो अच्छा है. यस. यश, व्हाट अबाउट यश? कचौरी वचौरी खाई कि नहीं? राजस्थान का कचौरी बहुत फेमस है. खाया क्या आप लोगों ने? कभी किसी ने खाया क्या? गया क्या कोई राजस्थान यश के अलावा? राइट, यश तो उधर ही रहता है पाली में. गया है कोई या नहीं गया? अथर्व? सर, आई एम बेस्ड आउट ऑफ राजस्थान ओनली. हाँ गया. फिर तू तो आई मीन कचौरियाँ बहुत माई खाता होगा. आई मीन माई पेरेंट्स, दे आर ओके, बेस्ड आउट ऑफ तो अभी क्या राजस्थान. अकेला रहता है क्या दिल्ली में? दिल्ली या कहाँ रह रहा है अभी तो? नो नो, अभी नेटिव दिल्ली में ही रह रहा हूँ. ओके, यस. बढ़िया है. राइट, आई हैव बीन टू जयपुर. राइट, जयपुर का प्याज कचौरी इज वेरी फेमस. राइट, अगर आपको कभी टाइम मिले और मन हो कि बहुत अच्छी सिटी देखनी है, राइट, जयपुर इज द वे टू गो. करेक्ट. जयपुर, बैंगलोर, वेरी गुड सिटीज टू एक्सप्लोर. राइट, मेरा रिकमेंडेशन. कुर्ग भी अच्छा है. राइट, जितना मैं जाके आया हूँ मैं बोल सकता हूँ आपको. राइट, चलो कैन वी स्टार्ट? एवरीबॉडी ओके? ब्रेकफास्ट, चाय, कॉफी. कैन वी स्टार्ट? इन्फ्लेशन, आर यू ओके? कैन वी गो टू डेप्रिसिएशन? राइट, बोलो. Yes, sir. राइट, कनिष्का आर यू बैक? अथर्व बैक? यस सर. Yes, sir. कैन वी स्टार्ट? अथर्व खाल्ले पोहे वगैरे काय? Yes, sir. ओके, मतलब स्टेपल डाइट है भाई हमारा पुणे लोगों का, पुणे लोगों का. मैंने भी पोहे खाए इसलिए उसको पूछ रहा हूँ. करेक्ट.
मैं भी आज सुबह मेरे को लेट हो गया बहुत सब करते करते। मॉर्निंग में आई वाज टेकिंग आउट क्वेश्चंस फॉर योर वो सब। मैं आई मेक अ शीट कि इफ यू सी स्टडी हब पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, राइट? इफ यू गो हियर, अगर आप यहाँ जाएंगे स्टडी हब, एक मिनट, इज द स्टडी हब नाउ विजिबल टू यू? देखो जरा, दिख रहा है क्या स्टडी हब रे? तो इफ यू सी हियर, इधर देखो प्रैक्टिस में आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 106। सो आई एम ट्राइंग कि ये सारे क्वेश्चंस भी हम क्लास में डिस्कस या सॉल्व कर सके। तो वॉट एवर क्वेश्चंस आर डिफरेंट, राइट, आई एम पुटिंग इट अप इन अ पीडीएफ फाइल, राइट? क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। तो व्हाट वी कैन डू लॉजिकली इज, इसमें से भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है विच आर नॉट कवर्ड इन द एग्जाम किट इन व्हाट कैप्लन, राइट, प्लस बीपीपी के भी सारे क्वेश्चन एक जगह लगा रहा हूँ। सो वी गेट अ गुड 100-120 क्वेश्चंस। उसमें से 1/3 या 1/4 भी अपन सॉल्व कर पाए, 40-45 ऑड, वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट? तो हो जाएगा। तो योर सिलेबस विल बी ऑन अ वेरी गुड ट्रैक, करेक्ट? हाँ, एक मिनट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया क्या रे बाबा? एक मिनट, हाँ, ये आपको भेजने का था ना, वेट लेट मी सेंड यू। या एक मिनट, यू हैव द दिस बुक नो, क्या बोलते हैं, एग्जाम किट है ना आपके पास? डू यू हैव द एग्जाम किट विथ यू एवरीबॉडी? है क्या एग्जाम सॉफ्ट किट? कॉपी, यस। सॉफ्ट कॉपी है ना? उसमें फर्नस्ट कंपनी है। ये रहा देखो 33rd क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, राइट? तो आप फर्नस्ट कंपनी यहाँ ओपन करके भी बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक। ठीक है, आ जाओ, फर्नस्ट कंपनी यहाँ तक तो पहुंचे। चलो लेट्स गो टू डेप्रिसिएशन। ऐसा लिख लो, डेप्रिसिएशन एंड टीएस ऑन टीएडी। मेरे को बोलो, व्हेन विल यू कैलकुलेट टीएस ऑन टीएडी एंड व्हेन विल यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? बोलो, in which method will you calculate depreciation and use it in your cash flow analysis, and in which method will you use TS on TAD and use it in your cash flow analysis? बोलो। TS on TD on direct Depreciation method. and indirect method, and TS on TAD indirect method. परफेक्ट, परफेक्ट, बराबर है क्या? टेल मी, ये हो गया। हाँ ठीक है, अब नीचे एक डेप्रिसिएशन बोल के लिखो चार्ट। अब ना, सी, once you are doing things it will get more and more clear, right? So depreciation and TS on TAD, करेक्ट? सबसे पहला बेसिक लिखो, डेप्रिसिएशन राइट, फर्स्ट डिडक्टेड देन एडेड। मतलब कौन सा मेथड? फर्स्ट डिडक्टेड देन एडेड। विच मेथड एम आई टॉकिंग अबाउट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? बोलो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? फर्स्ट डिडक्टेड देन एडेड, ये डिडक्टेड है डीईडी, डिडक्टेड देन एडेड, डेप्रिसिएशन फर्स्ट डिडक्टेड देन एडेड। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड, टेल मी, बोलो। Indirect. इनडायरेक्ट मेथड, करेक्ट? सेकेंड, TS on TAD, right? Only to be used. कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? दिस इज डायरेक्ट मेथड। नीचे लिखो, इन AFM, इन फॉरेन NPV क्वेश्चंस, indirect method is used mostly. नेक्स्ट वीक में अपना फॉरेन NPV शुरू हो जाएगा। चलो आगे।
चल लेट्स गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. एक्चुअली डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पे ना 4 या 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं. वन इज WDV मेथड. सबसे फेमस क्या है? WDV. उसके बाद है SLM बेसिस. करेक्ट. एक है SLM बेसिस प्लस एडवांस वर्डिंग. करेक्ट. तीसरा है 100% डेप्रिसिएशन अलाउड इन फर्स्ट ईयर. ये 3-4 मेथड से मैंने डेप्रिसिएशन देखा हुआ है. These 3-4 wordings are used in depreciation. Correct. WDV is the most famous, right? So एक aspect we look into the Excel file. Okay. आ जाओ. WDV method. So will you be okay now? आपको थोड़ा once you look at it, right? You sit with the notes, look at the Excel notes. Will you be able to link concepts? Tell me. Easy होना चाहिए अभी. Tell me. Slowly that linking का आदत पड़ जाएगा. Correct. Write down example. हाँ, एक मिनट. इधर डायरेक्ट फर्नेस्ट कंपनी कर सकते क्या WDV के लिए? राइट. इसमें वी कैन राइट फॉर WDV रेफर फर्नहर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. आ जाओ फर्नेस्ट में ही आ जाओ. अगेन कम बैक. विल डू अ वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन एज वेल एज TS ऑन TAD. आते क्या जरा? टेल मी. फर्नेस्ट कंपनी क्वेश्चन. इज इट विजिबल टू यू बाबा? हैव अ लुक. इज द क्वेश्चन विजिबल टू यू? फर्नेस्ट कंपनी. यू कैन लुक एट व्हाट. इधर भी फर्नेस्ट कंपनी. आ जाओ जरा. इधर भी दिखेगा आपको. वेरेवर. दोनों में से कोई भी जगह चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आ जाओ जरा. वेरेवर. इफ यू हैव दिस सॉफ्ट कॉपी इधर से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट. हाँ. yesterday had given नो. हाँ आ जाओ जरा. फर्नेस्ट कंपनी. इधर ये वाला पार्ट. पेस कंपनी टैक्स ऑन प्रॉफिट एट एन एनुअल रेट ऑफ 25%. सर ठीक है. टैक्स इज पेबल इन द ईयर इन विच द टैक्स लायबिलिटी अराइजेस. मीन्स टैक्स इज पेड इन द सेम ईयर और टैक्स इज पेड इन अरियर्स इन नेक्स्ट ईयर. बोलो. Same year. Same year in which it arises means what? Same year. ठीक है. Tax allowable depreciation is available at 20% on the investment in non-current asset on a reducing balance basis. Means what? Reducing balance means WDV or SLM? Tell me. WDV. WDV. Everybody okay with WDV? Tell me. A balancing adjustment will be available in year 4 and the realizable value at the end of the investment period of year 4 is expected to be 0. Okay with this? That means scrap value is how much? Tell me. 0. ठीक है. आ जाओ जरा. Working note 4 is what? Depreciation. Correct. Now how do you draw this working note? First you do opening WDV. Correct. Opening WDV कतरा से? Tell me. How much is the investment that company has done? Tell me. Investment कितना किया कंपनी ने? देखो जरा. How much is the investment that company has done? बोलो. Depreciation will be calculated on that investment in non-current assets only. They have said कितना investment in non-current asset? 16 million. We are using amount in dollar thousands. First year में how much should be the opening WDV? बोलो. 16 million लिखो या divide by 1000 करना पड़ेगा? Divide by 1000. Tell me. चलो. Then how much is the depreciation every year at 20%? बराबर है क्या? बोलो. Depreciation at 20% is how much in first year? Tell me this into how much? How much is the depreciation? बोलो बोलो. This into how much? 20%. How much is it? Tell me. बोलो बोलो. अथर्व, कनिष्का, केशव,
कितना है बाबा? Tell me. 3200. 3200. Then leave one line. Do closing WDV. कितना है closing WDV? This minus this. This will be then opening balance in next one. Correct? Then tell me, will you do 16,000 into 20% or this 12,800 into 20%? Bolo. 12800. This into 20%. Correct? And then closing WDV will be what? 10,000 something. Third year, 10,240. Right? इसका 20%. Correct? Have a look. 2048. Then how much is the closing WDV? 8192. Abhi fourth year pe there is a question. Fourth year pe what to do? Is the scrap value given in fourth year? Tell me how much is the scrap value? Bolo. 0. Are you going to get any scrap value? 0. See, if there is a scrap value, that means at the end of the period, will you have asset with you or will you not have asset with you at all? Bolo. Asset रहेगा आपके पास or has the asset been sold now? Scrap value 0 है, that means will you scrap the asset or will the asset still be in your possession? Tell me. So both can be the possibility. If the Both can be if the the possibility. machinery Huh? Asset if will the not machinery any value. has if the machinery has become obsolete, the scrap will become 0. 0. That And means if have it you is not removed the obsolete, machine? From your premises? Tell me. You call someone, yes, it's like, sir, I will take the machine, but I cannot give you anything. Correct or not? Scrap value is 0. So will there be machine present at the end of the project if the project is over? Tell me. You will remove it. So will there be any closing WDV or will the closing WDV be 0? Tell me. 0. Right? Have a look. Right? Hence, sir, you want to say either depreciation or whatever is the value, correct, between what? Tell me, the opening WDV and the scrap value, right? Your closing WDV will always be 0. Answer 8192 will be nothing but the depreciation or amount that goes to the P&L. See whether that is okay. You must have done balancing charge or balancing allowance at FM level. Same thing, correct? So, sir, what is balancing charge or balancing allowance? Right? Write down. Now, see, generally what happens, how we understand this, correct? I'll take this in the depreciation ka working note, correct? Okay with this? Now, here, let me write a note. Right? Here, the scrap value is 0, which denotes that there is. Now logically think about it, sir, you sold the machine for 0 and now you don't have WDV, sir. 8192 ka balance that is there, an asset which had a debit balance of 8192 you sold for no money. That means, is there a loss or is there a profit on sale of asset? Tell me. Bolo. Loss. Loss, correct. So here the scrap value is 0, which denotes that there is what? Tell me. No value for the machine and hence sold and will have 0 closing WDV, right? Balance of machine before sale कितना था? Tell me. Balance of machine before sale 8192. Sale value कितना है? बोलो. Tell me. 0. Correct? 0. And hence there is a loss or profit? Tell me. Loss. Loss on sale of machine, right? Loss on sale of machine, correct? How much? 8192 minus 0. Arey sir, but depreciation ka kya? End of the year you should have calculated depreciation. But at the end of the year, is there asset available to calculate depreciation? Tell me. Asset available hai to calculate depreciation? Tell me. No, Yes sir. or no? Not at all. Correct. Right? So loss on sale of machine. Now this loss on sale of machine, will it not be allowed as an expense in the P&L? Tell me. Yes. Loss on sale of machine, right, is allowed as a allowable expense, as an expense in the P&L, profit and loss account. Correct.
in the profit and loss account, and hence will be reducing the profit, right? Okay, okay. So depreciation बोल के ही P&L, like depreciation goes to the debit of P&L, this also goes to the debit of P&L. Okay with it? Now see, depreciation at 20%. This is indirect method में you use this, correct? Right? But when it comes to TS on TAD, if I calculate TS on TAD here, एक मिनट, can I go back to, एक second, can I go back here furnished में? If TS on TAD was asked, how would you calculate TS on TAD? Have a look. How much is the tax shield available because of what? Depreciation. How much is the percent of tax saved because of the depreciation? Tell me. Depreciation or loss, whatever it is. Tell me. 25%. So TS on TAD at 25%. Correct. Tax is paid in same year, right? Paid in same year. Correct. So this 3,200 पे 20% you will save. Correct. Every year. ये ओके है क्या? ये मेथड, ये इनडायरेक्ट मेथड से अगर होगा तो यू यूज दिस वैल्यू, करेक्ट? बट इफ इट इज डायरेक्ट मेथड, विच वैल्यू विल यू यूज? दिस So वैल्यू. 25%, no? 25% है? नहीं, मैंने 20% क्या, सॉरी यार. नाउ इज इट ओके एवरीबॉडी? 800 640 512 2048. कोई प्रॉब्लम है इसमें? एनीवन? ओके. बट वी आर डूइंग राइट नाउ विद इनडायरेक्ट मेथड, तो कैन वी यूज दिस अबाउ? एक मिनट, आई विल अपडेट दिस, देन आई विल कम बैक. एक मिनट, हाउ डू यू हैंडल डेप्रिसिएशन? आ जाओ जरा. फर्स्ट व्हाट यू विल डू, इधर क्या करूं, डेप्रिसिएशन नेगेटिव में लिखूं या पॉजिटिव में? टेल मी, व्हेन यू आर डिडक्टिंग फ्रॉम टैक्सेशन और फ्रॉम प्रॉफिट, नेगेटिव डेप्रिसिएशन विल कम हियर, करेक्ट? नेगेटिव डेप्रिसिएशन, एक मिनट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, डेप्रिसिएशन ना, वेयर इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट हुआ? हाँ ये रहा, करेक्ट? चलेंगे, राइट? एंड देन अगेन सर, सेकेंड इंपैक्ट ईयर पॉजिटिव डेप्रिसिएशन डालने का. उधर नेगेटिव डाला, इधर पॉजिटिव डाला. ओके है क्या? देखो जरा, कोई प्रॉब्लम? टेल मी. Now see, can you calculate net operating profits before tax? Now see what you'll do, contribution plus fixed cost plus other cost plus depreciation. चारों साल का आ गया क्या? चलो, टैक्स पेड इन सेम ईयर है या अरियर्स है? बोलो जल्दी. पेड इन Same year. सेम ईयर और अरियर्स सेम ईयर. तो ये भी जाने दो, ये भी जाने दो. चलो आ जाओ. इज इक्वल टू दिस इनटू हाउ मेनी परसेंट बाबा? 25%. दिस इनटू 25%. ठीक है क्या? देख लो. Now tax paid means negative or positive? Tell me. Negative. बराबर है. This plus this is your net operating profit after tax. बराबर है. फिर this plus this gives you what? Tell me. Profit से this was profit after tax. उसमें you add back depreciation. What do you get? Tell me. क्या है ये? Net operating क्या है? Cash flow after tax. देख लो जरा. ओके है क्या? अब इसके बाद क्या? स्क्रैप वैल्यू. हाउ मच होता? स्क्रैप वैल्यू 0 सर. अब खाली बचा है वर्किंग कैपिटल. बट बिफोर गोइंग अहेड, डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन पे थोड़ा बहुत बात करना है, करेक्ट? आर यू ओके विद दिस डेप्रिसिएशन? ए, आई विल गिव यू टाइम टू डू दिस. इफ यू हैव नॉट डन दिस, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी. आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी. और इफ यू वांट 2 minutes, just go through this what I have done. Where all two adjustment of depreciation are there. Have a look. एक ही सेकंड आप देखो, तब तक मैं पानी का बॉटल भर के लाता हूँ. चलो, ओके है क्या? टेल मी, एनी प्रॉब्लम?
बोलो बोलो. Can I go ahead? Can I go into detail of depreciation and TS on TAD? बोलो. चलो. Rupal madam, what do you say? Kanishka, okay with it, beta? Harsh, Yes, sir. should I go ahead? Chalo. Now let's go into what? Detail of depreciation and TS on TAD. Agar either TS on TAD also we can calculate at 25%. Right? This into 25%. Correct? This is direct method. Right? Chalo, aa jao. Now what if, एक minute, right? Here, right, Farnhurst में, हाँ, if in above question, extra question, okay? If in above question, Farnhurst company, if scrap value, ठीक है, scrap value was $5,000 thousands, या 5 million, whatever you want to say, ठीक है, $5 million, right? Calculate depreciation and क्या करना? Tell me. TS on TAD. Correct? अभी उसमें भी राइट, टैक्स रेट ले लो. टैक्स रेट तो ठीक है, टैक्स पेड इन, यानी मैं ऐसे करता हूँ, एक मिनट, ए पेड इन सेम ईयर एंड पेड इन नेक्स्ट ईयर. करेक्ट? आ जाओ जरा. हाउ विल यू डू दिस? टेल मी. विल एवरीथिंग एल्स बी सेम? स्क्रैप वैल्यू कितना आ जाएगा? टेल मी. बोलो. सी आई विल कॉपी दिस ऑल, सब कुछ कॉपी करता हूँ. करेक्ट? वेयर विल बी द चेंज? टेल मी दैट. बोलो रे बाबा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन. What will happen to scrap value? बोलो. Scrap value is how much? Tell me, tell me. कितना है scrap value? 5 million. Where should I write scrap value? बोलो. बोलो बोलो. बोलो. Same question, furnished company, everything else same. Okay. What will happen to depreciation? Scrap value कितना at the end of fourth year? 5 million है क्या? Scrap value, 5 million 5,000, लिखूं yes. या divide by 1000 करके लिखूं? Divide by 1,000. Divide by 1000. Divide by Correct? इसमें कोई प्रॉब्लम? Now, as you have sold the asset, is there going to be any closing WDV? Tell me. Zero. Will there be any closing WDV? No, zero. Now, sir, there was an asset of 8192, right? And you sold it for 5,000. Is there a loss on sale of machine or profit on sale of machine? Loss. Loss. How much is the loss? This minus this. Loss कितना है? 3192. Correct? And because of it, you will have a TS on TAD at 25%. There will be a tax shield. Correct? This depreciation balancing, this is called as what? Tell me. This 3192, correct, is called what? Balancing Balance- charge or balancing allowance. allowance? Tell me. Allowance. Balancing Allowance allowance. means what? हाँ, balancing allowance बोलते हैं इसको. Balancing allowance. This also, this 8,000 ऊपर इधर 8192 here, this is also balancing allowance. Correct? But एक minute. Sir, what do you mean by balancing allowance? It is nothing but, sir, when in the last year of the asset, right, when you sell the asset, if there is a loss, it will be an allowable expense, or it is a balance of machine that is lost due to the sale, right, is allowed as an allowance
और अलाउड एज एन एक्सपेंस, राइट? तो 1 मिनट नोट्स के अंदर आ जाओ, करेक्ट? गिव हेडिंग सेल ऑफ एसेट, sale of asset plus depreciation, right? Make two parts. If opening WDV in last year of project, if opening WDV in last year of project is greater than scrap value, बोलो। यानी अभी अपना कितना था 8192 एंड स्क्रैप वैल्यू इज 0 या 5000, टेल मी what will happen? Is there a balancing allowance or a balancing charge? Tell me. Loss and balance. Balancing allowance, right? 1 minute. Balancing allowance, right, will increase your expenses or decrease your expenses? Tell me. Increase your expenses. Expenses increased. एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो टैक्स सेव होगा या टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा? टेल मी. Tax save. टैक्स सेव्ड, करेक्ट? बट वही, अब 1 मिनट, कम बैक टू द एक्सेल, सेकेंड पार्ट विल डू इट इन एक्सेल फर्स्ट, राइट? तो हैव अ लुक, इधर 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 1 मिनट, 1 मिनट. रिड्यूसिंग द प्रॉफिट बराबर है, दैट इज ऑल्सो सेविंग टैक्स, बराबर है? चल, अब थोड़ा प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं. सेम क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये रहा एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1, करेक्ट? अभी देखो टीएस ऑन टीएडी ये सेम ईयर है, ठीक है? और मैं अगर आगे एक और लाइन डालू और बोलू टीएस ऑन टीएडी इन अरियर्स, तो क्या करोगे आप? टेल मी. ऑल दीज विल बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर. ए बट इफ टैक्स इज इन अरियर्स, क्या डेप्रिसिएशन एक साल आगे जाएगा क्या? और डेप्रिसिएशन रिमेन्स इन 1 2 3 4 ओनली, सर. यानी इनडायरेक्ट में इट विल रिमेन 1 2 3 4 ओनली, बट इफ यू हैव टू डू टीएस ऑन टीएडी इट विल गो अहेड. एनालिसिस, क्या बोलती जनता? मेक सेंस? बोलो. सुना था क्या एक इधर? टेल मी. बोलो. सो विल द डेप्रिसिएशन का टाइमिंग चेंज और ओनली द टीएस ऑन टीएडी का टाइमिंग विल चेंज? बोलो. थिंक अबाउट इट, व्हाट आई एम सेइंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. TS on TAD का timing will change. Only TS on TAD will change. Depreciation तो A and B both answer will remain the same. Depreciation तो same year tax, right? No impact of tax timing on depreciation. बराबर बोल रहा हूँ कि everyone. कनिष्का, what do you say? अथर्व पढ़ते का? Right? A and B both answer same year arrears, correct? चलो ठीक है. एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 में आओ. इफ देर इज अ प्रॉफिट व्हाट विल वी डू? चलो आ जाओ. एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2, सेम क्वेश्चन, कट कॉपी पेस्ट. आई विल डू व्हाट? इट इज 15 मिलियन डॉलर्स. क्या करूं फिर? टेल मी. हाउ मच इज द स्क्रैप वैल्यू हियर? 15,000. इज देयर अ प्रॉफिट और इज देयर अ लॉस? बोलो. टेल मी. प्रॉफिट या लॉस है? क्या है सर? 8192 ओपनिंग WDV आई सेल इट फॉर 15,000. प्रॉफिट या लॉस है? इट इज अ प्रॉफिट ऑन सेल, करेक्ट? एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ Profit. मशीन, हियर द स्क्रैप वैल्यू. 1 मिनट, इधर 0 लिखा है क्या? हियर द स्क्रैप वैल्यू इज 5,000 एंड डॉलर थाउजेंड ऊपर में भी लिख लेते हैं. विच डिनोट्स देयर इज नो वैल्यू फॉर मशीन, डिनोट्स मशीन विल हैव 0 क्लोजिंग WDV. ठीक है, ये हो गया. फिर इसके बाद ये भी कर लो.
5 की जगह कितना है ये 15,000 करेक्ट। क्लोजिंग WDV बराबर है क्या, देखो जरा आपको, यू डोंट हैव टू डू दिस विथ मी राइट। चलो देन दिस इज बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस, टेल मी। चार्ज सर, दिस विल इंक्रीज द प्रॉफिट, चार्ज है ये, इनडायरेक्ट मेथड से आएगा राइट। एंड दिस इज व्हाट, बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस, बोलो बोलो बोलो, चार्ज या अलाउंस, इट विल बी बैलेंसिंग चार्ज Charge. करेक्ट। दिस इज एज पर डायरेक्ट मेथड करेक्ट। But here, tell me, this 1702 and 1702, is it tax saved or is it extra tax payable? Tell me. Extra tax payable. Extra tax payable due to profit on sale of asset. Correct? आ जाओ अभी इधर, profit on sale of machinery 6808. Correct? So profit on sale. Now what will profit do? Tell me. Profit on sale of machine is what? Charged to the P&L. And hence will reduce the profit or increase the profit? Bolo. Increase or the reduce? profit. Increase the profit. Right? That is also extra tax savings or extra tax payment or savings of tax. Tell me. Extra tax. Extra tax payment. Correct. Makes sense. Have a look. Is this okay? WDV वगैरह. Tell me. This is extra question 2. Right? अब चलो SLM basis पे चलते हैं. Can we go to SLM basis? Are you okay with WDV? WDV में कोई problem है? Any method comes up, will you be able to manage indirect, direct, balancing allowance, balancing charge? कर लोगे या will you have problems? Tell me. बोलो 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 बोलो. Make sense or does not make sense? क्या करूं? क्या करूं? आगे चलो. Tell me. WDV done. Tell me. चलो write down next heading as what? SLM basis. आगे के SLM basis चलते क्या? A has a machine for 10 या 1 million ले लेते या 100,000 ले लेते with useful life of 5 years. Project life is 5 years. ये एक काम करो, ऐसा करो, project life is 5 years. Correct? Full stop. Right? Depreciation allowable on SLM basis. Correct? SLM basis. Correct? चलेगा. चलो आगे. Scrap value is equal to, right, 15,000. Calculate depreciation, indirect method, correct, and TS on TAD, direct method, right. A, tax paid in, tax at 20% paid in same year, and tax at 20% paid in arrears. ठीक है क्या रे? Can we do the calculation? Tell me. चल same thing you do what? ये तो कॉपी कर लो, right? आ जाओ. चल, हाउ मच इज द ओपनिंग WDV? अभी WDV लिख सकते क्या? इज इट WDV और शुड वी राइट SLM? बोलो बोलो, WDV या SLM? टेल मी. क्या लिखूं या ओपनिंग Opening बैलेंस balance. लिखूं? बैलेंस. Opening करेक्ट. balance.
Opening balance is how much? 100,000. Correct. Depreciation 20% पे है क्या? नहीं. How is the depreciation? Tell me. What is the calculation of depreciation SLM basis पे? Tell me. Initial investment minus what? Tell me. याद करो. Scrap value. Minus scrap value. Scrap value upon divided by time. what? Divided by Tell me. useful life. Useful life of Correct. assets. So 100,000 minus 15,000, राइट. एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 5 बराबर है क्या? इज इक्वल टू कितना आता है बाबा? टेल मी. हाउ मच इज एवरी ईयर? बोलो बोलो. एवरी ईयर डेप्रिसिएशन बोलो. टेल मी. 100,000 माइनस 15 बाय 5 कितना आएगा? 17,000. 17,000. 17,000 per year. So have a look. Bracket 100,000 minus 15,000. The whole divided by what? 5. Correct. Every year will it be same? Yes. आ जाओ. Scrap value at the end will be how much? Tell me. Closing क्या लिखना पड़ेगा? Balance. Correct. Have a look. And at the end how much is scrap value बाबा? Tell me. Scrap value कितना है? 15,000. 15,000. How much will be the closing WDV? Tell me. This minus this minus this. ए ऐसा कैसे हुआ? ए 5 years है ना इधर. सॉरी. Scrap value at the end of 50. बराबर है. ये एंड में 15,000 भी माइनस हो गया. अरे सर वो बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग अलाउंस, इज दैट ऑल इवन अ पार्ट ऑफ व्हाट? एसएलएम बेसिस. एसएलएम बेसिस में एट द एंड 32,000 सर 15,000 में सोल्ड, 17,000 डेप्रिसिएशन. एसएलएम बेसिस एवरी ईयर डेप्रिसिएशन टू बी अप्लाइड ऑन द सेम वैल्यू. Correct. So sir, there is no concept per se of balancing charge or balancing allowance. That means is the depreciation fully predictable or not predictable at all? See here in WDV, is the last year depreciation amount or the balancing charge or balancing allowance, right? Something that you can predict? No. Sir, in SLM basis it is, you can predict. Have a look. So here, no tension of balancing charge or balancing allowance. Correct. As depreciation amount is fixed today itself. काम खत्म. Any whichever way it is what? An additional expense that is there. देख लो जरा ओके है क्या? Or you have any doubt here? बोलो. TS on TAD अपन 25 हो गए. 20% लिया क्या? 20% पे कर देता हूँ. ये TS on TAD में कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? Have a look. Okay with it? कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन था. Just have a look at it, right? One change that I've seen in some questions, right? ये टाइप 1 क्वेश्चन है. चलो एक खाली चीज इफ आई चेंज, टेल मी व्हाट हैपेंस. एक देखो, टाइप 2 क्वेश्चन देखता हूं, राइट. वन थिंग आई एम चेंजिंग. प्रोजेक्ट लाइफ इज 10 years. विल द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन चेंज और नॉट चेंज? बोलो. ए नहीं, एक मिनट रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी. प्रोजेक्ट 5 year है. विल एवरीथिंग चेंज और नॉट चेंज? बोलो. Useful life is 10 years. Depreciation What will amount happen? will change. Depreciation amount will change. Scrap value 15,000 अभी आएगी या 10 years बाद आएगी? Tell me. 10 years बाद. This divided by Okay. 10, so how much will be depreciation? Tell me. 8500. Correct. अब देखो 8500. Correct. Every time it is 8500. अभी एक only up to 5 years should I take? या depreciation तो come till what year? Tell me. 10th year.
ये तो अमाउंट इन डॉलर्स है। बोलो इधर 15,000 आएगा क्या? नहीं, सेम दिस विल बी देयर अप टू 10th ईयर, करेक्ट। डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी देखो जरा, और लास्ट इधर इट विल कम 15,000। बट सर नाउ व्हाट टू डू, टेल मी, क्या करते, गड़बड़ हो जाएगी। टीएस ऑन टीएडी ऑल्सो सर अप टू 10th ईयर, but tell me for the project you will take up to what year, tell me, फिफ्थ क्या ईयर करो? ओनली। only 5 years, right? लिखता हूं मैं the note, as the project life is lower, only take either depreciation or TS on TAD at the same or up till 5th year only, करेक्ट। अब मैं इसको मार्क करता हूं कि कौन सा आएगा, ठीक है। देखो इसको कलर कर रहा हूं पर्पल। इधर इधर डेप्रिसिएशन में ये 5 साल इधर तक ही आएगा या पूरे 10 ईयर्स आएंगे, टेल मी। इफ ओनली प्रोजेक्ट लाइफ इज 5 ईयर्स, टेल मी, इतना ही। एंड इधर कितने तक आएगा, इधर 5 ईयर्स। और टीएस ऑन टीएडी कब तक आएगा बोलो, 5th और 6th ईयर तक, टेल मी। 5th या 6th 6th ईयर कब तक। तक आएगा, 6th ईयर तक। 6th ईयर तक। बराबर है क्या? जो पर्पल है बहुत ही डेंजर कलर है ये, बदल डालते हैं। हाँ ये ठीक है, ओके है क्या? देखो जरा, हैज कम अप इन एग्जाम, कैन कम अप इन एग्जाम, देख लो। ओके कोई प्रॉब्लम, कैन आई गो एट? अब लास्ट क्या बचा है, टाइप 3। टाइप 3 क्या है बाबा? एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक मिनट, हाँ कौन सा था एक क्वेश्चन का नाम, जीके पे, वेस्ट पार्ले, वेस्ट पार्ले कंपनी था शायद। अरे किधर तो डेप्रिसिएशन का था, एक गड़बड़ था। एक क्वेश्चन है, वेट आई शो यू। उसमें क्या बोला था मालूम है क्या? क्वेश्चन क्या था बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या था, आई टेल यू, राइट। यू कैन कॉपी दिस लेटर ऑन, ठीक है। 15,000 as per the, and 15,000 and will have tax implications, राइट। ऐसा क्वेश्चन था, एक मिनट मेरे को मिल रहा है क्या वो क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन में है वैसा। एनुअल रेट, हाँ बैलेंसिंग एडजस्टमेंट विल, हाँ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हाँ ये रहा, आफ्टर इन्फ्लेशन लिखा है ना, ये वाला महगम पैसो, चुमारा ही था क्या, चुमारा चुमारा चुमारा, आफ्टर इन्फ्लेशन, इसमें ही था क्या, नहीं चुमारा में। हाँ आ जाओ जरा एक मिनट चुमारा में, और किधर है देखने दो मेरे को क्वेश्चन।
UA project 15% on straight line basis. हाँ, ये UA project. आ जाओ जरा इन द बुक, पेज 31 ऑफ योर बुक. UA प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन है? तलम कंपनी क्वेश्चन. तलम कंपनी UA प्रोजेक्ट. UA प्रोजेक्ट दिख रहा है क्या? राइट, देखते क्या दिस क्वेश्चन. राइट, एक मिनट मैं ऐसे बोलता हूं, टाइप 3. ठीक है, रेफर तलम कंपनी. आ जाओ. The UA project will need 35 million of machinery to produce the drones. छोड़ो ना. Initial investment how much? 35 million. Tax allowable depreciation is available on 15% per year on a straight line basis. Correct. The machinery is expected to be sold for 7 million post inflation at the end of the project. आईला आता काय करणार? कैसा करेंगे? What is the depreciation? Tell me. How to calculate depreciation? आप तो डेप्रिसिएशन कैसा कैलकुलेट करते हैं? एसएलएम बेसिस पे. टेल मी. एक मिनट. राइट, डेप्रिसिएशन एट 20% इधर करते हैं अपन. करेक्ट. राइट, एंड 15,000 राइट आफ्टर इन्फ्लेशन. बोलो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. राइट, और हाँ एक मिनट, यूजफुल लाइफ भी 5 years ही है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? टेल मी. अभी एक मिनट, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ना. एक मिनट, कितने ईयर का प्रोजेक्ट देख लो. हाउ मेनी ईयर्स इज द सेल? टेल मी. सेल कितने साल का है? 4 years. तो प्रोजेक्ट कितने साल का है? 4 years. हाउ टू कैलकुलेट एसएलएम बेसिस इस पे डेप्रिसिएशन? बोलो, चलो आ जाओ. आई विल रिड्यूस द नंबर ऑफ ईयर्स. करेक्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. बोलो 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 बोलो. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरीबॉडी, क्या लगता है रूपल मैडम? Yes, sir. कैसा करेंगे ये कैलकुलेशन? कैसा होगा? 100,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय क्या करूं? ये होगा क्या पहले तो वो बताओ. 100,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 5 वगैरह कुछ करूं क्या? ऐसे होगा एसएलएम का. बट एसएलएम क्या बोला है? 20% ऑन एसएलएम. कसं काय होणार? कैसे क्या होगा? टेल मी. हाउ डू यू थिंक इट विल हैपन? बोलो. कनिष्का, क्या लगता है? Cost, हाँ, क्या sir, कॉस्ट? SLM will be on 20% of the cost of the टोटल machine. कॉस्ट पे एसएलएम ले लो क्या? यानी आप बोल रहे हो डेप्रिसिएशन 100,000 इंटू 20% ले लो. बराबर है? एवरी ईयर Yes. सेम. यानी एवरी ईयर कितना होगा? टेल मी. 20,000. 20,000. एवरी ईयर 20,000 फॉर ऑल द 4 years. राइट. फिफ्थ ईयर में क्या होगा फिर? स्क्रैप वैल्यू कितना है? 15,000. फिफ्थ ईयर में क्या करूं फिर? व्हाट डू आई डू? दिस 20 माइनस 15,000 हो जाएगा क्या? टेल मी. डिफरेंस. एक मिनट, पहले अपने ये बैलेंसिंग चार्ज कंप्लीट किया क्या? एक मिनट, ये बैलेंसिंग, आई विल कम बैक टू दिस. ये लिख लो पहले. ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इन लास्ट ईयर. प्रोजेक्ट इज लेस देन स्क्रैप वैल्यू. यानी हमारे क्वेश्चन में 8192 था और 15,000. करेक्ट. क्या होगा? बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस? टेल मी. चार्ज होगा ना रे. 8192 15,000. राइट. इनकम इंक्रीज्ड. एक्स्ट्रा टैक्स पेड. एक्स्ट्रा टैक्स पेड. ठीक है क्या? हैव अ लुक. ओके है. हाँ, अब आ जाओ वापस. इज दिस ओके अप्रोच? इज दिस ओके अप्रोच?
लास्ट में बैलेंसिंग चार्ज बैलेंसिंग अलाउंस आएगा, क्या होगा बोलो। एक मिनट, ये ठीक है 15% का, तो 20% नहीं आएगा, जनरली लोअर आएगा, तो कितना आएगा बाबा 15% पे? 15% दैट इज इक्वल टू 15,000 एवरी ईयर। इज एनीवन अंडरस्टैंडिंग के छोटा सा डिफरेंस क्या है, टेल मी और नो। बट लास्ट के मंथ में क्या होगा सर, दिस 40 माइनस 15 बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस आएगा, राइट। यर बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस, राइट, will appear as depreciation amount is fixed today itself, but in last year due to scrap value these BA or BC amounts are calculated. आपको अभी ये बहुत इजी लग रहा है, बट व्हेन इट केम इन द एग्जाम स्टूडेंट्स आर व्हाट कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज व्हाट, टेल मी, दिस इज बैलेंसिंग चार्ज, बराबर है क्या? नहीं, ये अलाउंस है, सॉरी, अलाउंस, करेक्ट। ये देख 15% लो कैसे हो गया सर? क्या मैंने चेंज किया जानबूझ के, अच्छा। इधर चेंज किया ना 15%, ताकि वो एंड में 5,000 वगैरह छोटा नहीं, बड़ा बैलेंसिंग अलाउंस आ, करेक्ट। देख लो, व्हाट डू यू से कनिष्का? सर ये हाँ, एसएलएम प्लस एडवांस्ड वर्डिंग वाला। SLM प्लस एडवांस वाला, यस, ये है SLM प्लस एडवांस वर्डिंग। जब आप तलम कंपनी, आप लिख सकते हो रिफर तलम कंपनी सॉल्व करोगे ही अगले 1-2 हफ्ते में, राइट। वी आर गोइंग टू सॉल्व चुमारा और तलम। नहीं भी किया तो इसमें जो प्रॉब्लम वाला पार्ट था है ऑलरेडी टेकन, बाकी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, करेक्ट। हैव अ लुक। ओके एवरीबॉडी, क्या लगता है रूपल मैडम, इतना एनालिसिस जरूरी है क्या? टेल मी रोशन, क्या बोलते हैं मैडम? हमने एफए में भी शायद किया था ये क्या इस टाइप का क्वेश्चन एफएम लेवल में भी कुछ हुआ था आई गेस। FM लेवल पे ये नहीं हुआ था, हाँ ये हुआ था ऊपर का, ये जो आप हाँ। 10 ईयर और 5 ईयर वाला है ना, वो हुआ था हम्म। ऐसा है। अरे हमने इधर पूरा उड़ा दिया क्या? रुको एक मिनट, इधर ऐड कर देता, रुको। अरे पूरे रो हमने डिलीट मार दी क्या? रुको रुको रुको, ऐसा नहीं, थोड़ा बराबर तरीके से करते हैं। हाँ, ये पूरा डिलीट नहीं मारते, ये इतना वापस कर देता, आप डरो मत। कनिष्का, डिड यू नो ऑल दिस इन डिटेल? टेल मी। एग्जाम में आ जाता तो आपको तकलीफ हो जाती, सर करेक्ट। इतना तो नहीं किया है मैंने एफएम। इतना आप एनालिसिस करोगे ना तब FM का पेपर, फिर देन यू कैन बी अश्योर्ड दैट व्हाट यू विल स्कोर हाउ मच, मिनिमम पासिंग 60 तो मार्क्स। आप स्कोर करोगे ही। अरे 60, हमारे सब बच्चों को 60 प्लस आते हैं, ऐसा पासिंग मार्क वगैरह मत बोलो, जोकिंग, ओके। सी पासिंग मार्क्स के लिए इतना, पासिंग मार्क्स एंड स्कोरिंग नाइसली, यू एटलीस्ट नीड व्हाट, टेल मी, दिस मच लेवल ऑफ क्लैरिटी, करेक्ट। यस सर। राइट, हैव अ लुक। अब ओके, ठीक है क्या? देखो here it is a mix of SLM basis and WDV, and thus has in last year, thus as in last year क्या है भाई, बैलेंसिंग चार्ज। क्योंकि ये क्वेश्चन जब आया था क्वेश्चन में एग्जाम में, एवरी वन वॉज सो कंफ्यूज कि सर परसेंटेज दे दिया है
और SLM बेसिस बोला है, करेक्ट. डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, बैलेंसिंग अलाउंस एंड बैलेंसिंग चार्ज इम्प्लीकेशन. एफएम में भी सर एक दो क्वेश्चन एग्जाम किट में थे जैसे जिसमें एसएलएम बेसिस पे परसेंटेज दिया हुआ है. ऐसा था क्या? मे हाँ भी सर. होगा उनका, राइट. अभी हम FM, मैंने परसेंटेज नहीं दिया मैडम SLM पे. हाँ, आप अगर बोले है ना ये सर. 10 years वाला, 10 years वाला नहीं ये ये वाला भी था. मेरे पास है सर एग्जाम किट की है क्या? वर्किंग मैं भेजूंगी ओके, सर. हाँ सर. ठीक है. चलो, मैंने पढ़ा है क्या? हाँ सर. ओके, ठीक है. ओके विद दिस, टेल मी एनी प्रॉब्लम. नाउ आर यू कंफर्टेबल? एनीथिंग कम्स अप, डेप्रिसिएशन, TS on TAD, will you be able to handle, बच्चे लोग? So what I have done, see, I'll tell you simply what I have done. Okay, every question that has been asked, all adjustments I am taking all at once, right? वो मेरा आदत है. So when you उस sit to टाइम में solve भी आपने questions, कहा था सर ऐसा कि ये एएफएम लेवल का है, इतना एफएम में नहीं आ सकता, बट वी नेवर नो, हम जज नहीं करना चाहिए. करा है मैंने, मेरे को मालूम है. I remember, right? वो question probably I would have taken at the end when we are doing what? Some practice, correct? हाँ. हाँ, चल. अब ये हो गया. उसके बाद what? नेक्स्ट मेथड कौन सा है बाबा? SLM बेसिस डन, करेक्ट. SLM के दो जो थे वो किया. नाउ 100% डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर, करेक्ट. 100% डेप्रिसिएशन, 100% डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर, करेक्ट. ये नेक्स्ट मेथड है, करेक्ट. ये तो और भी इजी है, करेक्ट. इफ आई टेक दिस क्वेश्चन, राइट. मशीन 100,000, useful life of 5 years, project life of 5 years, but depreciation allowable at 100% in first year, करेक्ट. बोलो. हाँ, किया ना, किया क्या? अब दिख रहा है क्या कार्तिक? इन फर्स्ट ईयर. और कभी कभी क्वेश्चन में होता है इमीडिएटली, करेक्ट. स्क्रैप वैल्यू, जनरली इसमें स्क्रैप वैल्यू दी नहीं होती, करेक्ट. मैं क्या कर रहा हूं इधर, अभी रेड करके रख रहा हूं, पूरा ही रेड करके रख रहा हूं, राइट. ये टाइप 1 में अपन ले लेते कि स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है. टाइप 1, राइट. नो स्क्रैप वैल्यू गिवन, ठीक है. फिर डिलीट मार देते, बाद में स्क्रैप वैल्यू लेंगे, ठीक है. आ जाओ. तो इसमें तो इट इज वेरी इजी, करेक्ट. स्क्रैप वैल्यू भी कुछ है नहीं. यू हैव ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर में, राइट. हाउ मच इज इट? 100,000. एंड फुल डेप्रिसिएशन, व्हेन इज इट अलाउड? डेप्रिसिएशन एट 100%, बोलो. दिस इंटू 100%, करेक्ट. सो हाउ मच इज द क्लोजिंग WDV? बोलो. 0, राइट. एंड TS on TAD कब आएगा? टेल मी. एट 20%, राइट. सेम ईयर, ठीक है. तो क्या आएगा? बोलो बोलो. दिस इंटू 20%, बट इफ इट इज इन अरियर्स, करेक्ट, then that TS on TAD will come in second year. But rarest of the rare question में क्या हो सकता है? That scrap value is given. क्या given होगा? Scrap value. तो if type 2 question is to be considered, type 2, इसमें कुछ लिखने का जरूरत है क्या? Tell me some note or anything, or is it self explanatory? बोलो. कुछ ज्यादा लिखने का जरूरत है क्या? स्क्रैप वैल्यू गिवन, टाइप 2 क्वेश्चन. एक क्या करोगे रे? स्क्रैप वैल्यू 15,000 गिवन. थोड़ा प्रॉब्लम है. इज देयर फ्रिक्शन हियर इफ स्क्रैप वैल्यू इज गिवन? टेल मी, क्या करोगे एट द एंड ऑफ ईयर 5? ये देखो 15,000 इधर है. व्हाट यू विल डू हियर? बोलो. क्लोजिंग WDV तो 0 है, बिकॉज द फुल एसेट इज रिटर्न ऑफ. 15,000 यू रिसीव्ड. सर
there was no debit balance to write off from the asset, yet you got, or 0 was opening balance of the asset, sir, and I sold it for 15,000. क्या होगा? Is there profit or is there loss? Is there balancing allowance or balancing charge? बोलो. चार्ज। चार्ज, यानी सर ये 15,000 माइनस ये करोगे, सॉरी 0 माइनस द 15,000, करेक्ट, ये बैलेंसिंग चार्ज आएगा, करेक्ट, क्या आएगा? बैलेंसिंग चार्ज. सो इधर नोट लिखनी पड़ेगी. एंड सर व्हाट विल हैपन हियर? हैव अ लुक, 5th और 6th ईयर में, राइट, नोट एज द whole asset is depreciated in first year itself, and hence we should take balancing, or we should take 15,000 scrap value as full profit and say that it is balancing, it is balancing charge, correct, and it will increase profit or decrease profit, tell me. Profitability, बराबर है ना? But will lead to what? Extra tax payment or lower tax, savings of tax, tell me. Extra tax payments, बराबर है क्या रे? Tell me. Any problem with this? Have a look. Done. ये rarest of the rare situation है, कभी मैंने नहीं देखा है आज तक आते हुए. ठीक है, इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन में कुछ दिखेगा ऐसा मेरे को लगता नहीं है. बेस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन, बराबर है क्या? एनी प्रॉब्लम? टेल मी. कैन आई गो अहेड? टेल मी. क्या लगता है मैडम? व्हाट डू यू से? रूपल मैडम, केशव, यस सर। Yes, केशव sir. क्या लगता है? सही जा रहा है? हर्ष, बढ़िया है, यस सर। कोई प्रॉब्लम? अब अगला जो हम एनालाइज करने वाले वो है टैक्स. क्या करने वाले एनालाइज नेक्स्ट? कॉर्पोरेशन टैक्स. चले क्या कॉर्पोरेशन टैक्स में? यू वांट अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक? ब्रेक चाहिए या ओके? बोलो. ब्रेक ले लेते, फिर 1 घंटा एंड में करते 1:30 तक, चलेगा? 12:30 तक ब्रेक देता हूँ. Done. ठीक है, आ जाओ. कम बैक बाय 12:30 PM, then we'll continue to up till 1:30, correct? Aj we'll try to complete most of this part and do what? I'll give you 2-3 questions for homework, okay?
Quickly come back, guys. Audible, visible. Back. बोलो बोलो. Yes, Albina. sir. चल कुशल. बैक बेटा. केशव. Yes, Yes, sir. sir. चल. रोशन आ Yes, गया क्या sir. बेटा वापस? यस सर. चल लेट्स स्टार्ट. आ जाओ. चल लेट्स गो फॉर द टैक्सेशन पार्ट. चलेगा? यश बैक. हर्ष आ गया. में चलो. कैन आई गो एट? चलो 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 चलो. हाँ. लेट्स गो फॉर टैक्स. करेक्ट. एंड वर्किंग नोट ऑफ टैक्स. आ जाओ. कॉरपोरेशन टैक्स. राइट. पहले नोट्स में लिखो. हेडिंग कॉरपोरेशन टैक्स. राइट. राइट डाउन कॉरपोरेशन टैक्स. See, when you calculate tax on profits, right? Am I talking about indirect method or am I talking about direct method? Tell me. Indirect. Indirect method. But when I'm talking tax on cash flows, देखो tax on cash flows. What am I talking about? Tell me. Direct method. Direct method. ये बराबर जा रहा हूँ क्या? कार्तिक व्हाट डू यू से? रूपल मैडम. Yes, यस sir. सर. अब ना टैक्स ऑन कैश फ्लो होगा तो ना ज्यादा लफड़ा नहीं है इसमें. व्हाट 4-5 टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स अप. इजी है वो. राइट. सो इफ आई से टैक्स ऑन कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड. करेक्ट. इसमें देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टेंशन. राइट. राइट. लेट्स से ऑपरेटिंग कैश फ्लो. करेक्ट. कैश फ्लो दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस. राइट. ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेट्स से 5,000, 7,000, 8,000 और 4,000. ओके. मेरे को कैलकुलेट करना है टैक्स एट 25%. राइट. ऑन और पेड इन सेम ईयर. हाउ विल आई डू इट? टेल मी. वेयर विल टैक्स अराइज? बोलो बोलो. दिस इंटू 25%. नेगेटिव आएगा. माइनस दिस इंटू 25%. इसमें कोई प्रॉब्लम? इन अरियर्स बोलू तो क्या होगा? बोलो. ऑल दीज कैश फ्लोज विल इट बी इन 0, 1, 2, 3, 4 या विल इट बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर? टेल मी. बोलो बोलो. टेल मी. सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर. यानी कि सर देर इज मियर व्हाट चेंज ऑफ ईयर. बाकी तो और कुछ नहीं होगा. राइट. बट इफ आई ऐड नाउ सी इफ आई डू दिस क्वेश्चन ओनली. करेक्ट. हैव अ लुक. दिस इज व्हाट कंपनी ए हैज फॉलोइंग. एक मिनट. थोड़ा सा और चेंज करता हूं. ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स. बराबर है. दिस ऑल्सो आई विल डू बिफोर टैक्स टू गेट मोर क्लैरिटी. करेक्ट. ओके. कंपनी ए हैज फॉलोइंग नेट ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स. उसके बाद अभी देखो मैं क्या चेंज करूं. जस्ट फोकस. ओके.
क्या है? इज देयर कैश फ्लो पॉजिटिव में या कैश फ्लो नेगेटिव में? टेल मी, बोलो बोलो। नेगेटिव, नेगेटिव. अभी इन पॉजिटिव, दिस नेगेटिव. केस positive negative both. In this case, if I write a line, that company A has existing business which can or which has sufficient profit, to cover the losses in the new business whose operating cash flow are given above. Correct. I want to talk about an important issue. Okay, sir, if there are losses or negative cash flows, whatever you want to say, right? There are two ways of dealing with what? Negative losses, yeah, negative profits or losses, correct? That means 5,000, 8,000 and 4,000 are profits, but 7,000 is loss. One way of dealing with this, correct? तो अगर मैं इधर बोलूं कि इधर 3 है, correct, only profits, correct, then I will say profit and loss, उसमें 2 है, correct. One is what? Tell me, existing business can take care, correct, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. यही सेम डायरेक्ट मेथड में भी ये 3 तरीके से ही है कामकाज, राइट. हाँ, इधर लिखना दिस इज डिफॉल्ट. इफ नथिंग गिवन, व्हाट टू डू? इफ नथिंग गिवन, व्हाट टू डू? यूज दिस इज द डिफॉल्ट मेथड. ऐसा लिखो, दिस इज द डिफॉल्ट मेथड. टेक केयर ऑफ existing business profits लिखो. Profits can take care of losses of new business. Now here थोड़ा सा we have to understand this, right? थोड़ा सा just what? Focus here on the screen. If you are okay, can I go ahead? Tell me. Have you written this down? इधर भी same. Indirect method में also same. Sorry, direct method में also you can say the same. Same copy paste you can use there. No issues. यानी देखो ऐसा लिख सकते हो. Positive operating cash flow before tax. No tension here, but positive and negative operating cash flow before tax, right? In that case ये दोनों चीजें आप यूज कर लो. This can be copy pasted there. Same thing. ठीक है क्या? Yes. Write it down first, then we'll do the question. Don't worry about it.
बोलो, आर यू ओके? चलो आगे बच्चा लोग, कैन आई गो अहेड? हैव यू रिटन दिस डाउन? डायरेक्ट मेथड का ऑनेस्टली नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आई एम डूइंग ऑल द 3 + 3 6 टाइप्स आई विल डू. चलो क्या? टेल मी now how to take care of this. Now see what is happening here. For understanding, now see, company A already has business 1 where there is $1,000 millions ka profit, correct? And in the same year in business 2, which is a new proposed business, correct, you have a loss of $700 million. So when you make a consolidated P&L, क्या होगा बाबा? Tell me. Consolidated P&L में what will happen? Sir, profit and loss, if you are calculating, correct, sir, you will say B1 ka profit 1000 is there, $1,000 million whatever, and B2 ka how much is it? Tell me. 700. So how much is the net profit? बोलो बोलो, net profit कितना है? How much is net profit? Tell me. On what will you pay tax? 300, 1000 or 700? बोलो. 300. 300. 300. But sir, if this business was not there, business 1 ही होता खाली, तो business को कितना tax पे करना पड़ता? How much tax would the only B1 had to pay if 20% was the tax rate? $200 million, correct? But because of this 700 losses, correct, that come from the new proposed business, what happens? Net profit is 30 million. So how much tax company has to actually pay after consolidating the profits? Tell me. 60 million. So how much is the tax savings due to this loss? Tell me. 140. 140 million. 140 million. Same thing, just a second, right? If I'm saying that I have sufficient profits to cover this 7,000 loss, so because of this 7,000, or I could say because of this 700 that came up, 20% did I do tax savings? Tell me yes or no. So when I'm calculating tax on this, देखो जरा, because of this operating cash flow before tax, right? If I have to calculate tax at what? 20%, correct? ये कितना दिया है? Have I given a tax percentage here? 25%, correct? Correct. Calculate tax if A paid in same year, correct? Same year B paid in arrears. देखो जरा. Then in this case, what will happen, Baba? Have a look. This negative, this into 25%. बराबर है? देख लो. Correct. But sir, here what will happen? Positive. Is this tax payment or tax savings due to the losses? Tell me. 7,000 का 25% tax savings or tax payment? Tell me. Tax savings. Savings. These are the payments, sir, because of the profit or cash flows that you have earned. Correct. यही क्या है? This is same year. Correct. And this is tax at 25 arrears. Arrears होगा तो what will happen? Only the year is going to go ahead, बाबा. Everything else will remain same. अब ठीक है क्या? देखो जरा, make sense or no? Okay है? Tell me. या टेंशन है? Any tension here? Tell me. बोलो बोलो. रूपल मैडम चलो आगे. Tell me. But what if the same question, okay, had nothing given? देखो 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 देखो. Nothing given. देखो हाँ, what I'm doing. Nothing given. Hey, wait. Sorry. Sir, in this case, it's written that the existing business have हाँ sufficient लिखा है ना, वही तो profits. मैं बोल रहा हूँ. लिखा है इसलिए हम लोगों ने क्या किया? We have taken what? So if I do this yellow or whatever color, right? And either if I write here the losses of new business is used against profits of old business, correct, or existing business, leading to what? Tell me. बोलो. Tax refund or Leading tax to savings. tax savings
राइट, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, करेक्ट। अब यहाँ पे आए रिमूव दिस लाइन, करेक्ट, एंड बोल दिया कैलकुलेट टैक्स, राइट। इन दिस केस व्हाट यू विल डू अ वर्किंग नोट ऑफ टैक्स, करेक्ट सर, वर्किंग नोट, करेक्ट। व्हाई वर्किंग नोट? हैव अ लुक, व्हाट विल बी द वर्किंग नोट? देखो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स, आई विल से कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड यूटिलाइजेशन. Losses will be what? Carry forward in next year, and you cannot directly do this, right? Tax का working note बनेगा, right? So sir, have a look. 5,000 will be what? In or will be taxed here. Sir, here 7,000, or I should say this 7,000 will be carried forward, correct? Positive कर देता हूँ. Carried forward to next year, correct? And utilized in next year. बराबर है क्या? So how much is the revised profit या revised cash flow before tax for tax calculation? करेक्ट। देखो सर, ये 5,000, करेक्ट, नो कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं। एंड सर दिस ईयर 0 टैक्स, करेक्ट, नेक्स्ट ईयर 7,000 विल बी कैरिड। सो ये 8,000 का प्रॉफिट, लॉसेज ऑफ 7,000 रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द 8,000 प्रॉफिट, एंड हाउ मच विल बी द टैक्स दैट विल बी पेड एट व्हाट 25%, अगर हम लोग करते हैं तो 25%, ओके। तो टैक्स पेड एट 25% कितना होगा? दिस इंटू 25%, करेक्ट। हैव अ लुक, व्हाट इज द लाइन दैट विल गो इन द मेन आंसर? ये जाएगी मेन आंसर में, दिस विल गो, करेक्ट। आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स लिया, मेन आंसर में ये जाएगा। यानी अगर मेरे को मेन आंसर करना है तो कुछ ऐसा बनेगा मेन आंसर, करेक्ट। सर ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स इज गिवन टू यू, ये आएगा, करेक्ट, एंड देन टैक्स पेड ऑन इट विल बी दिस मच। देख लो, उसमें से ये टैक्स पेड एट 25% आएगा। दिस विल बी द मेन आंसर, बराबर है क्या? देखो, Sir, what उधर if डायरेक्टली कर सकते। हाँ बोलो। if 2 consecutive years there are losses? हाँ, इफ देर आर 2 कंजिक्यूटिव, तो दोनों ईयर के लॉसेस। अब देखो, इफ इट वाज व्हाट, टेल मी, ऐसा होता, यानी इधर 7,000 और इधर 4,000 होता, नेगेटिव। एक सेकंड के लिए आई एम जस्ट डूइंग इट हियर, एंड यहाँ पे 14,000 होता, बराबर है। तो मैं क्या करता, इसको और कैरी फॉरवर्ड करता, करेक्ट। ये 7 और 4 पूरा कैरी फॉरवर्ड किया, और पूरा 11,000 यहाँ यूज कर लिया, बराबर है। समझ में आ रहा है? कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली अलाउड, नोट लिख देता हूं यहाँ पे। हाँ, ये याद रखना, मेन आंसर में ये जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, थर्ड टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट, राइट। ये मेन आंसर में जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। नोट, लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इंडेफिनेटली, करेक्ट। देख लो, आर यू ओके? टेल मी, सॉरी। हाँ, अब ओके है। देखो जरा, प्लीज हैव अ लुक एट इट। 4 नहीं, कितना था ये? 8,000 था, सॉरी। अब ये ओके है क्या? हैव अ लुक। But in reality, there is a limit on which नहीं, for how many years we यूके can टैक्स carry में अगर forward the आप losses. पूछो, यूके टैक्स में इफ यू आस्क मी, राइट, यूके टैक्स सेज यू कैन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इनडेफिनेटली, बट इंडियन टैक्स में बोलो तो, रूपल मैडम, कितना? 8 इयर्स ना? आई रिमेम्बर लास्ट 8 7 or ईयर, 8, 7 or 7 8 8 8 इयर्स, years 7 years. हाँ 7 और 8 इयर्स, बराबर। 8 मैं था years तभी 8 इयर्स, करेक्ट। अब शायद बदल गया क्या, राइट। 7 सम पीपल 7, सम पीपल 8, करेक्ट। इंडिया में वो है, बट इफ यू सी ग्लोबल लेवल पे जनरली यू आर अलाउड टू व्हाट, you will be surprised to know, can I give you a keen into UK tax? UK tax में तो ना, if you ask me, correct, you can carry back also losses,
not 1 year but 3 years back 3 also you can years. carry back losses. करेक्ट है क्या? बराबर है क्या मैडम? अरे आप हाँ थे ना सर, यूके टैक्स तो, आप हाँ लास्ट सर, वाली बैच में थे यूके टैक्स वाली, बराबर ना? यस सर। हाँ How बराबर है। does this carry back? कैरी बैक आपको नहीं है, एएफएम में कैरी बैक का कुछ भी नहीं। एटीएक्स में आओ आप हमारे पास, तो हम कैरी बैक ऑफ लॉसेस आपको पढ़ाएंगे, चलेगा क्या? एटीएक्स में आना, एएफएम में कैरी बैक नहीं है, राइट? तो टेंशन वाला बात नहीं है, ओके राइट? तो कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनिटली, बराबर है। देख लो, इफ नथिंग गिवन व्हाट इज द डिफॉल्ट मेथड, टेल मी। नथिंग गिवन डिफॉल्ट मेथड क्या है, बोलो बोलो। Nothing given, Carry Carry forward forward. losses. carry forward. If given that you have profits which can cover what losses. एक क्वेश्चन है बट एग्जाम में और इन द एग्जाम किट वेयर समथिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस इज गिवन। अभी एक तलम कंपनी में पढ़ा था मैंने, आ जाओ जरा फॉर अ सेकंड, तलम कंपनी। ए आर यू ओके ऑफ मी juggling questions, trying to read it so that when you solve them you will be much more clearer? Tell me, आ जाओ जरा। तलम में ही था क्या रे बाबा, तलम में ही था लॉस का। तलम नहीं, इसके पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला था आपको? चुमारा, चुमारा में था, चुमारा में। चलो एक मिनट, CHMURA, चुमारा कंपनी, CHMURA, चुमारा कंपनी, पेज 28 ऑफ योर बुक, पेज 28। चुमारा में था क्या? पैरामीटेड बैंक, यहाँ पे है ना सर, टैक्स अगेंस्ट एनी टैक्स लाइबिलिटी टुमारो कंपनी इंकर्स ऑन ओवरसीज अर्निंग्स। ओवरसीज नहीं, वो अलग है मैडम, ओवरसीज का जो है ना दैट इज डिफरेंट। नहीं, एक क्वेश्चन में आई विल शो यू, मैं ढूंढ के रखूंगा, बट इन वन क्वेश्चन राइट दे हैव यूज्ड दिस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस राइट एंड यूटिलाइजेशन। ये लाइन कभी भी मेन आंसर में नहीं जानी चाहिए, दीज टू लाइन्स विल नेवर गो। ऑलवेज वेन एवर यू हैव लॉस, इधर नोट लिखता हूं, ऑलवेज whenever you have losses, right, make working note for calculation of tax, right? चलेगा? लास्ट अभी क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड से करके निपटा लेते, ठीक है? चले आगे। डायरेक्ट मेथड में सेम कट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग विल बी यूज्ड, राइट? सो डायरेक्ट मेथड, टैक्स ऑन व्हाट, प्रॉफिट्स, आ जाओ। डायरेक्ट नहीं, सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड, राइट? ऊपर के एग्जांपल ले लूं, चलेगा? टेल मी, इजियर टू डाइजेस्ट एंड इजियर टू सॉल्व, करेक्ट? सिर्फ आई हैव टू चेंज द वर्डिंग, करेक्ट? एक मिनट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की जगह पे क्या ले लूं? टेल मी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, करेक्ट? टैक्स पेड इन सेम ईयर, टैक्स पेड इन अरियर्स, करेक्ट? टाइप 1 है ये, ठीक। फिर टाइप 2 पे चलते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, अब एक बार वो ऊपर का कर लिया तो इट इज वेरी इजी, करेक्ट? दादा मैं पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, खाली कैश फ्लो की जगह पे क्या कर लूंगा? टेल मी, एक वन बाय वन एंड गो, डोंट वरी, ओके? ये देख लो, इफ एग्जिस्टिंग बिजनेस में, राइट, आ जाओ। दिस इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स आई विल डू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, राइट? एक नेगेटिव है, करेक्ट? तो आई हैव मेड अ वर्किंग नोट,
राइट। हाँ, इधर वर्किंग नोट नहीं, राइट, तो इधर वर्किंग नोट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। इधर तो डायरेक्टली आ जाएगा बिकॉज यूर सेविंग टैक्स, करेक्ट। देख लो 1750 losses of new business is used against what, saving tax at 25% on that। कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ओनली प्रॉफिट्स का कैश फ्लो से क्या होगा। ओके क्या, देख लो, कैन आई गो अहेड। चल टाइप 3 भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नथिंग गिवन, करेक्ट। एक मिनट, इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए। सेम है, कट कॉपी पेस्ट, कुछ भी डिफरेंट नहीं, ओनली प्रॉफिट आई विल डू व्हाट, कैश फ्लो की जगह पे प्रॉफिट, करेक्ट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करेक्ट। रिवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर कैलकुलेशन, टैक्स एट 25%, राइट, जो भी टैक्स पेएबल है, राइट, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एट 25%। कुछ भी डिफरेंस नहीं, कट कॉपी पेस्ट व्हाट वी डिड फॉर फर्स्ट 3, खाली कैश फ्लो की जगह पे क्या होगा, प्रॉफिट्स। बट व्हेन इट इज व्हाट, कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट, so you will have to make a working note, simple and sweet, as good as that। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स आई हैव नॉट सीन। यू हैव अ लुक एट दिस, टिल देन थोड़ा मेरे को देखने दो, इफ आई कैन फाइंड दैट क्वेश्चन जहां पे लॉस था। मेरे पास ओल्ड इसमें वो क्वेश्चन है, मे बी आई कैन डायरेक्टली शो यू फ्रॉम द ओल्ड वर्किंग ओनली, ठीक है। एएफएम जून का जो था उसमें आई माइट हैव डायरेक्टली डन दैट। चुमारा में ही था क्या लॉस, चुमारा में नहीं, लॉस नहीं है चुमारा में। हम्म। ट्रिपल टाइम में लॉस है क्या बाबा, लॉस लॉस लॉस। हाँ देखो, ट्रिपल टाइम कंपनी क्वेश्चन, ट्रिपल टाइम, आ जाओ जरा, आई विल शो यू द जून का वर्किंग, हाउ वी हैव डन ट्रिपल टाइम। आपको करना ही है ट्रिपल टाइम, बट जस्ट आई वांट टू शो हाउ लॉसेस आई हैव टेकन केयर ऑफ। दिख रहा है क्या इधर आपको, टेल मी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो जरा, लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, देन व्हाट, प्रॉफिट, बराबर है ना एवरीबॉडी। इज द AFM June 25 शीट विजिबल टू यू, टेल मी, बोलो। Yes, sir. सो हैव अ लुक एट वर्किंग, एक मिनट वर्किंग नोट में चलो, इधर क्या है, फाइनेंसिंग इफेक्ट, 1 2 3 4, 2 नहीं 3 नहीं 4, हाँ ये रहा देखो, नेगेटिव 14,650 लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड, यूटिलाइज ईयर, राइट, एंड देन टैक्स एट 30% ऑन द रिमेनिंग पार्ट, दिख रहा है क्या। यानी इधर आई कुड हैव डन व्हाट, प्रॉफिट, यानी लास्ट टाइम जो एक लाइन ऐड नहीं की, करेक्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर टैक्स कैलकुलेशन, ऐसा कर सकता था मैं यहाँ पे। हैव अ लुक, दिस प्लस दिस, हैव अ लुक, राइट, एंड देन टैक्स एट 30% ऑन व्हाट, नेगेटिव, दिस इनटू 30%, आर यू ओके, हैव अ लुक, आई हैव कैरिड इट फॉरवर्ड। तो 2 साल किसी ने पूछा था, शोभित आस्ट, सर व्हाट इफ, टेल मी, अब देखो इसमें क्या है, प्रॉफिट्स आर नॉट व्हाट, फुल्ली अवेलेबल इन फॉर सेकेंड ईयर, बराबर है क्या, टेल मी। तो सेकेंड ईयर से यू कैरी इट फॉरवर्ड टू थर्ड ईयर ऑल्सो, शोभित क्या लगता है बेटा, बराबर है क्या, यस, यस सर। करेक्ट।
So this is one way of looking at taxes. Okay, बंद करो अभी ट्रिपल टाइन, हम थोड़े दिन में आपको होमवर्क आएगा, probably this week or next week. Now there is one more concept, right? एक concept है इधर, you've drawn this below it, write down. Correct. आज तक कभी आया नहीं है, right? But foreign NPV में लिखो, in foreign NPV, some government may provide a tax holiday. क्या होता है टैक्स हॉलिडे? That is your profits or losses will not have any tax impact. Will not have any tax impact. बराबर है क्या? थोड़ा can we talk about this? Tell me about tax holidays. Can we talk? थोड़ा, right? Do you remember Reliance का भी रिफाइनरी है? I hope everyone knows. Oil refinery Reliance has, मालूम है? यस सर, गोदावरी पे। उनको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट मिला, टैक्स हॉलीडे मिला था फॉर फ्यू इयर्स. But there is a very interesting story behind it. मालूम है? What is the story behind tax holiday of Reliance? यस Idea सर, है? उन्होंने इनॉग्रेशन पहले कर दिया था, लेकिन ऑपरेशन बाद में शुरू हुआ था. But inauguration किसके हाथों करवाया था? Tell me. प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर क्या? तू था ना एफएम में? एफएम में ही बोली होगी ये स्टोरी. So what happened is basically there was a tax holiday given to what? See, when Mr. P. Chidambaram, ये कांग्रेस का टाइम का बात है, P. Chidambaram in his what meeting of budget made an announcement, boss, tax holiday of 10 years, right, to what? Business of oil extraction and oil what? Refining, right? तो जब भी द होल पार्लियामेंट स्टार्टेड लाफिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन बोल रहे, ऑयल एक्सट्रैक्शन, इंडिया में कहा ऑयल मिलने वाला था? बराबर है क्या? टेल मी. But they will get, whoever does both of these businesses, either refining नहीं तो extraction, will get tax 10 years of tax holidays. बराबर है? तो 10 year का tax holiday when it was what declared, one person who is very interested in the tax holiday is whom? Tell me. मोटा भाई, correct or not? They started searching for oil, right? So it was said that in the next 5 years, if you set up your business, right, तो उसके बाद के 10 years or wherever from your first year to your 10th year, no tax holiday, sorry, no tax payment, that means tax holiday, right? But 5 years were almost about to get over. Reliance had what? Invested a lot of money, right? But the plant was not over, correct? It would take 6-8 months more and the 5 years were over. The law said that by 31st March of whatever year and the plant does not open up, then tax holiday will not be available. So Reliance ne called then Prime Minister what? Manmohan Singh to do the inauguration. हुआ नहीं था काम. They had only half or I think 80% of the plant ready, but they did the inauguration with the help of whom? Prime Minister. First beaker of oil, right, was put up by the Prime Minister. Funnel, पहला oil funnel ऐसा उन्होंने डाला था, correct? And the process was started and they did a very big media event out of it. 27th या 28th March को, saying that we had started commence producing on 28th, so that 10 years का क्या मिले? Tax holiday, right? Maybe if you go to some, now see, if you go to some country, correct, and that country wants you to do business in that country, they will can give you tax holidays. So your profit or losses, not only profit, but your losses will have no impact. Means can you carry forward the loss if you have tax holidays? No. Profit अगर taxable नहीं है तो loss भी carry forward नहीं होगा. That 10 year का loss cannot be claimed. Profit will also not be taxed. Simple and sweet. Are you okay with taxes? Corporation tax, whatever it is. Any problem with this? बोलो बोलो. Carry forward, right, or something of that sort. ऐसा कुछ? चलो फिर आगे. Tell me. Can I go ahead? बोलो बोलो. Last अभी क्या बचता है?
Write down last heading, working capital investment. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एक दो तरीके करने दो, देन आई कैन गिव यू 2-3 थिंग्स फॉर होमवर्क, एज इन 2-3 क्वेश्चंस। आर यू अप फॉर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट? या आई फील द क्लास बीइंग वेरी डेड नाउ, ऐसा कुछ है क्या? टेल मी, आ जाओ जरा। नो What do you सर, want? अभी वर्किंग कैपिटल डन हो जाएगा तो फिर टॉपिक डन खत्म हो हो जाएगा जाएगा तो कर एवरीबॉडी? लेंगे। व्हाट डू यू से? अलवाइना, यस सर। Yes, हो sir. जाएगा वर्किंग कैपिटल? Yes. आ यस जाओ, सर। देन विल डू वर्किंग कैपिटल। नहीं तो क्या, इंस्टेड देयर इज नो पॉइंट स्ट्रेचिंग यू टू मच, नो। तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में राइट डाउन, give the heading working capital investment. 5 or 6 kind of questions I have seen in working capital investment, correct? Write down working capital investment as a percentage of sale, correct? Then working capital investment today, today's investment given and later on, today's investment given and later on, today's investment given and later on, working capital investment will increase by inflation percentage या वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेशन परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? देन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल प्लस एडवांस वर्डिंग्स। अरे आपको बहुत बहुत सारे क्या मिलेंगे, टेल मी, बहुत वेरिएशन मिलेगा। फिर वर्किंग कैपिटल बैलेंस गिवन एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डायरेक्टली गिवन। राइट, इसका तो ठीक है, एवरी पॉसिबल विल डू ऑन एक्सेल, करेक्ट? ये और ये साथ में लेंगे, दिस एंड दिस विल बी टेकन टुगेदर, फिर ये थोड़ा अलग पड़ सकता है। मेजर तो 3 ही है, राइट? ये दो मैंने ऐसे ही दिए हुए एफएम से कंटिन्यू हो रहे, वर्किंग कैपिटल बैलेंस गिवन, करेक्ट? वेरी इजी कंपैरेटिव, करेक्ट? चलो, टेल मी नाउ कम टू दिस फर्नहर्स्ट कंपनी। एक सेकंड के लिए, फर्नहर्स्ट कंपनी, या इधर चलो बुक में फर्नहर्स्ट डू वी हैव, फर्नहर्स्ट कंपनी में हाउ इज इट गिवन, दैट वी नीड टू सी। पहले लिख लो, टिल देन आई विल ओपन अप फर्नहर्स्ट फॉर यू। आ जाओ जरा फर्नहर्स्ट में। फर्नहर्स्ट कंपनी, ये कौन सा टाइप लग रहा है आपको? टेल मी, रीड फर्नहर्स्ट कंपनी, टेल मी विच पार्ट? सेकंड पार्ट। Second one. सेकेंड वन, करेक्ट? चलो पहले फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, फिर सेकेंड वन पे आएंगे।
Then furnished company ka you can do for homework, no issues. Correct. Working capital. Investment, right? Chalo. Working capital investment as a percentage of sale. Correct. Example. Company A has following sale, right? सेल्स है फर्स्ट ईयर में 25,000, 35,000, 45,000, 55,000, 35 है ना, 30 फिर 55,000 बराबर. प्रोजेक्ट लाइफ is 4 years. Working capital investment is 10% of sales. Now the first logic, calculate working capital investment if repaid back at the end of the year. End of the year at end of project, right? Repaid back at end of project, correct? And B, not repaid back. Yeah, repaid back, non-repaid back. We will understand this first. या पहले अपन थोड़ा वर्किंग कर लेते उसके बाद देख. करेक्ट. आ जाओ. आर यू ऑल विथ मी? टेल मी. चलो आगे. बोलो बोलो. हाँ, सबसे पहले कॉपी डाउन द सेल्स. Now tell me what is working capital investment and how does it work? बोलो. Working capital investment and how does it work? एक minute. See, even if I'm saying that sales, when I write it 1, it is cash flow received at the end of the year. But is it like, sir, पूरे साल sale करो and at the end of first year all the account receivable will give you money? Or is this sale that is done throughout the year? But it is assumed that cash will be received at the end of the year. What am I talking about? First option was what? Sir, I do sales all over the year and end में cash मिलता है, right? At the end of first year, that is 31st March, I go and bring cash from all my what sales that I do. Or else second part, right? Hear me out. That sir, I do sale throughout the year, but for understanding purpose and for NPV analysis, we assume that the whole cash flow is received at the end of the year, which is a better portrayal of 25,000 sale. Can you tell me? First or second? Theory question. Tell me. First or second, what is a better portrayal of sales? Bolo. Can you repeat again? I'll repeat. See, hear me out. Okay. Sir, this 25,000 sale I write in year 1. What is the basic logic in cash flows? That whatever I write in 1, correct, is cash flow received at the end of the year. बराबर है क्या? Everyone is okay with this? First tell me yes or no. Correct? Correct. इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? कार्तिक, केशव, anyone has problem here? No, Tell sir. me. Alvina, what do you say? Okay. But when it comes to sales, right? बाकी सारे cash flow छोड़ दो. When it comes to sales, leave all other cash flows aside. When it comes to sales, is it better to say
that sir sales happen evenly throughout the year, right? But sir ये NPV analysis में cash flow we assume that it is incurred at the end so that it is useful for what? वो discounting and all that. Tell me, am I on the right track or am I on the wrong track? Right track. Right track means today when I start business, from next day only or next day or next 15-20 days only will I start doing sales? Tell me yes or no. Yes. Day to day business, for day to day business do you require working capital? Yes or no. Yes. That means working capital will be required before you start doing sales or after you receive cash of sales at the end of first year. Tell me. Start of the year. So first working capital balance, right? Sir, I need at the start, I need to have what? A working capital investment, sir, right? Of how much? Sir, this 25,000 into 10%. बराबर है क्या? That only means I go to the bank and say, देखो, right? I want to do in the first year 25,000 का sale. 10% of that is something that I require as a loan or whatever, or you tell the business owner that why 2,500 will be the investment that you will have to do. Investment है तो negative, correct? Right? If you go to bank and take a loan, bank will say देखो we are giving you working capital loan, तो उसका balance कितना है? 2,500. Today you have used 2,500 का loan, correct? Okay sir, no problem, right? Then when you wait at the end of the year, you are like, sir देखो I have working capital and this working capital balance is what? Continuously roaming in the business, correct? यानी इसको मैं कभी कभी I show it like this. Have a look. See, this is what it is, correct? So better way to show it. You can also write it 1, 2, 3, 4, correct? First year में sir 25,000 sale is required, right? And at the start of the project or 0 year, correct? You need what? Sir, working capital investment you need 2,500, correct? आराम से गड़बड़ मत करो, correct? So sir, my working capital balance, right, is 2,500 negative. ऐसा करता हूँ, right? Okay. Now you travel to first year. You do business on the in the full year, right? And still you maintain this working capital. All what? Cyclical system works in working capital cycle, correct? Slowly now at the end of the year you are like, sir, I have 2,500 with me. In second year, how much is the sale that you are expecting? Tell me. Second year, how much is the sale you are expecting? 35,000. How much? Sir, 35,000 expected. Now you again go to the bank. Arey bank, now this year 35,000 ka sale is expected, right? Give us 3,500 more. Bank is like, you already have buddy 2,500 with you, correct? You have how much first year and pay? 2,500, because it is a working capital balance. You pay, repay, so balance will remain same. That means with the 2,500 you can do 25,000 ka sale, but you require additional investment of only 1,000, correct? And the balance that you will have with you is 3,500. You look back, ki, sir, I have what? Tell me, 2,500 ka balance. So next year, if it was 25,000 sale, no need to do any fresh investment, sir. But sir, additional sales of 10,000 is required. So additional working capital or incremental working capital of 1,000 is required. Correct? Then you go ahead, you wait at the end of second year. Correct? First ho gaya, second. Then you see how much is the sale expected in third year. Tell me, next year, third year. How much? 30,000. You have balance right now of 3,500. You look at this balance, right? You go to the bank. Arey sir, 30,000 sale require additional 3,000 give. Arey, shut up. You already have 3,500. Correct or not? Right? Give us back 500. Positive. Because now you need only what? Throughout the third year, you need only 3,000. That is 10%. And you have additional 3,500. So repay back 500. Correct? Then at the end of third year, you have a look. Sir, now last year of the project, we expect what? Again, more money. How much? 55,000 sales, sir. Correct? In that case, what? You already have 3,000 ka balance. You are like, bank, give 5,500 more. Bank is like, shut up.
You have 3,000. How much additional bank will give you? How much will you invest? Tell me. 2,500. Correct? Negative. So you will have 5,500. ये okay है क्या? Is this okay when I talk about working capital investment? This is the logic of working capital investment. See whether you are okay with this, or do I need to tell you by some other method? Tell me. Bolo. Everybody. What do you say? रूपल मैडम क्या लगता है? Okay, sir. Okay. Albina, what do you say, beta? Yes, sir. Understood. Understood. Shobit, Karthik, Kushal, what do you say, Kushal? Yes, sir. Understood. हर्ष, Yes, sir. हो गया बेटा हर्ष? Can I go ahead then? Now this is how we used to do it. If you remember, sir, देखो first we used to calculate working capital balance. Correct? देखो how I will calculate working capital. Sir, negative of 25,000 into 10%. देखो how I am doing it for all 4 years. Correct? Then, sir, working capital investment. This is what this. Then what you used to do? Remember? Tell me. Is equal to this minus of this. Is equal to this minus of this. Is equal to this minus of this. Correct? याद है क्या? Tell me. Are you okay working capital investment? But now a part of it you are repaying back. That means by the end of 4th year, tell me, will you take out all the investments that you have done in what? Tell me. Your working capital? Yes. Then sir, 0 is the balance. That means I have taken back all the money minus of this 500. Or if sir I go here, correct, at the end of 4th year, sir, the project is over and the bank is saying, Baba, the project is over, take back or give us all the money, or whatever investment you have done, take it out. Sir, 5,500 investment done, I take it out, correct, and repay it to the bank. The balance gets 0. Have a look. And sir, if nothing, now see here you have given A and B, correct? But what is the B part? Have a look. In B part, everything else remains same. But what will change in B part? Can anyone tell me? At the end, follow. At the end, sir, you go at the end, right? But what do you say? Arey sir, this 5,500 don't remove. Keep this 0. Then the balance will be 5,500 only, right? So sir, at the end, I will keep this only negative 5,500 and investment will be 0. That means no repayment back at the end of the year, right? Have a look. Make sense or does not make sense? Sir, Tell what me. is the logic of this repaid or not repaid हाँ. at the end of Now the see, year? repaid मतलब क्या? देखो, now I have taken working capital balance for a project. If that project ends after 4 years, should I keep the working capital balance with me? Sales वेल्स तो होने वाला है नहीं, right? I am going to close out the business. I am going to sell the machine only. So is it worthwhile keeping the working capital investment? Tell me. Think about it. Is it So worthwhile? it will be basically repaid back to the Repaid existing back. business. Yes. जो मतलब whatever you have invested in the business, correct, as working capital, you will take the money from everyone, give it, take in your pocket and give it to the bank. खत्म हो गया, correct? Everything done. But सुनो, there is one situation, correct, where they have to explicitly see. This is the basic assumption. So if I tell you that, if I tell you to draw something here, कि भाई below this, right, write down working capital investment, correct, plus repayment logic. Yeah, repayment that is there, right? If nothing given in question, ये देखो एक मिनट before I go here, right? Last 5-10 minutes, okay? I tell you that boss, the project is over after 4 years, right? Right? What is the basic assumption that you will take? I tell you that the project is closed after 4 years, the machine is sold, right? These two details I give you. There is some scrap value to the machine I have given you. In that case, will you consider two options? Is it better to consider कि sir working capital also will be done because sir machine only sold, now business will not be carried out, right? So that is a default method. Or sir repayment कुछ नहीं करने का, this working capital can be used in some other business. What is the better assumption to take? Tell me.
business sold, everything repaid back. So लिखो, if nothing mentioned in question, default method, repayment happens. At end of project. Right? But if specifically mentioned, that repayment will not happen at the end, then follow it basically. अब सुनो, you were selling the machine and everything, right? And you were with there are other businesses also in your business, and you were there with the manager, right? And you are like, sir, now this machine sold. So logical assumption is that working capital also will take out of the business and repay to the bank or whatever, correct? Right? And the manager gives you that stare. Why do you want to do that? This working capital will be required by some other business or used by some other business. Why should I raise money again? Yahi money I can use it there. In that case, right, if this is specifically mentioned in question, then tell me, will you do the repayment at the end? Tell me. That means, will this 5,500 be repaid at the end? No. It will remain the same or remain constant in the business. अब are you getting hang of what I'm trying to say? Tell me. बोलो बोलो. Basic assumption, why it is what? Repayment. Tell me. Kushal, what do you say? Yes, sir. I got it. Right? Correct. Have a look. A and B part. Now see, one more easier question can I give you? Tell me. हाँ. अभी 1 मिनट. ये फर्निश करके खत्म करके आई लीव यू. ठीक है. आई विल नॉट गो मोर इनटू डिटेल ऑफ वर्किंग कैपिटल. राइट. आ जाओ. विल डू वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्निश्ड. फर्निश्ड है क्या अपने पास? आ जाओ. Furnished company will also need to make an immediate investment of 1025 amount given to you directly in working capital. Immediate means what? 0 year or first year? 0 year. 0 year. Okay. तो वर्किंग नोट 5 में आ जाओ 1 मिनट के लिए. वर्किंग नोट 5 फर्निश्ड में. अब देखो यहाँ पे यू कैन डू इट सो इजीली. करेक्ट. आ जाओ. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देखो, right now how much is required? Tell me. 1.025 million. That means if I have to write the answer in dollars, thousands, how will I write? Tell me. Negative how much? 1 मिनट रुको. वर्किंग कैपिटल बैलेंस कर लेते पहले. आ जाओ. हाँ. How much will you do right now? -1025. बराबर है क्या? Tell me. Negative. Right? And then क्या बोला है? The working capital will increase annually at the start of each year. Each of year 2 to 4. अरे 2 to 4 बोला है by the inflation rate and is fully recoverable at the end of the project. Recoverable means what? Repaid back. No tension. Correct. तो देखो हाँ 1025. How much will it increase by at the end of first year? Tell me. ये 1025 0 ईयर से लेके फर्स्ट ईयर के एंड तक रहेगा. How much will it increase by at the end of first year? बोलो. Go to inflation. Inflation क्या है? Tell me. 4% year 1 and 5% in year 2 to 4. कैसा करेंगे? Tell me. बोलो. 5% से इंक्रीज होगा. तो आई विल से सर दिस इनटू 1.05 विल बी माय बैलेंस. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सर फर्स्ट ईयर में तो 1.04 सर. हाँ तो 4% होगा पहले या 5% होगा? टेल मी. 4%. ड्यूरिंग द फुल फर्स्ट ईयर. सर 4% से होगा पहले.
फिर सेकेंड थर्ड, राइट, एंड फोर्थ ईयर तक 5% से बढ़ेगा, करेक्ट. सो नाउ हाउ मच इज द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल एवरी ईयर, हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू विल डू. देखो ये 1025 0 ईयर, देन सर दिस माइनस दिस एंड सो ऑन. And at the end of fourth year, will it be fully repaid? Tell me. बोलो. तो सर at the end of fourth year 0 हो जाएगा सर. तो 1152.99 will be repaid. इसको और ब्रेकअप करना है क्या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में? आई डोंट माइंड डूइंग इट, अगर नहीं समझाए तो टेल मी. देखो जरा फर्नेस्ट कंपनी का आंसर है क्या अपने पास? एक मिनट. सर इसमें आपने सारे ही 104 से करा ना, ये सेकंड ईयर में नहीं 105 से होगा। नहीं, फिर 105, सॉरी, ये 105, ओके सॉरी. अब बराबर है क्या? देखो जरा फर्नेस्ट कंपनी देखते क्या रिव्यू यस सर। करते क्या रिव्यू. आ जाओ जरा. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखो 41, 53, 55. फर्स्ट ईयर सर 0 ईयर से फर्स्ट ईयर 4%, देन 55% एंड एट द एंड रीपेड बैक. ये 0 हो जाएगा क्योंकि इट विल एट द एंड बी रीपेड बैक. यू वांट टू गिव दिस अ ट्राई टुडे? टेल मी. होमवर्क में ये मैं आई एम गोइंग टू अपलोड दिस एक्सेल. एक मिनट, फिर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे एंड आई कंप्लीट द एनपीवी का आंसर. Then you have to redo furnished company today, correct? Right? Net cash flow sum from what year to year, correct? Then should I put up discounting factor? आ जाओ जरा furnished company में वापस. हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर डायरेक्ट क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11%. तो ये सब करने का जरूरत है डीसीएफ और डीएफ या डायरेक्ट एनपीवी एट 11% यू कैन फाइंड आउट. टेल मी. डायरेक्ट करो ना, काय को लफड़ा करते. 11% कॉमा, देखो 7025.22. अपना आंसर और उनका आंसर मैच हो रहा है क्या? नहीं रहे. 7801 सर कुछ लफड़ा है क्या? हाँ, सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट Zero टोटल में है। नहीं लेना ना, किसमें एनपीवी कैलकुलेशन, लेना पड़ेगा ना? क्यों नहीं लेना पड़ेगा मैडम? बट वो एंड में ऐड करना पड़ेगा. एंड में ऐड ऐसा कुछ थोड़ी रहता है ये. ऐसा ही क्या है? एक मिनट, आप कैश फ्लोस चेक करो. देखो 17025, 4104 क्यों आया इधर? कुछ माइनस करना भूल गए क्या अपन? देखो एक बार प्लीज. 4596 बराबर है 41 नेगेटिव में किया है क्या? 4596 नेगेटिव 4555 बराबर है 11% पे किया है, 10% पे किया है. उन्होंने 0.901 11% पे ही किया ना. हमने 11% डाला क्या? एक बार देखो. बराबर. गड़बड़ हो गया. इधर सर नहीं वो डालना 1 मैडम. ईयर से लेना हाँ चाहिए हाँ था. हाँ हाँ हाँ, वही तो गड़बड़. 1:30 गया ना मैडम. थोड़ा सा डिफरेंस है बट इट इज करेक्ट. 7797 है अपना. 3-4 का डिफरेंस है, चल जाएगा, करेक्ट. वी हैव यूज, अगर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करें अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, योर एंड देयर आंसर विल मैच. बट एग्जामिनर इज वेरी क्लियर, देर इज नो प्रॉब्लम. 7798 है अपना आंसर, उनका 7801 है. अगर मैं इधर डिस्काउंटिंग फैक्टर डाल दूं ना, देखो, राइट, एंड देन व्हाट डू आई डू? टेल मी. 3 डेसिमल पॉइंट्स तक अगर इसको लिखूं 901 या बेटर, रुको वैसे बताता हूँ तो आंसर मैच हो जाएगा. 0.659, 0.731, 0.812 और 0.901. और इससे अगर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से आंसर निकालूंगा, इट विल 100% मैच विद द आंसर दैट इज गिवन टू यू. बोथ मेथड्स आर ओके. हो रहा है क्या मैच? 7801 समथिंग है ना उनका, तो भी थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है. 901, 731.659 तो भी कुछ फर्क है. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, राइट. और इट इज एक्सेप्टेबल डिफरेंस. एक्सेप्टेबल डिफरेंस है. एग्जामिनर इज नॉट अलाउड टू कट योर मार्क्स हियर. पहले ही बोल रहा हूँ, करेक्ट. आर यू ओके विद दिस? कैन यू एटलीस्ट सॉल्व फर्नहर्स्ट कंपनी ऑन योर ओन टुडे? ट्राई कर सकते हैं, राइट. एक दो क्वेश्चन और है बट वर्किंग कैपिटल का पूरा ये हुआ नहीं, तो व्हाट आई डू, आई चेक. देखो ये क्वेश्चंस के इसमें एक दो क्वेश्चन है विच यू कैन सॉल्व. आ जाओ जरा. राइट डाउन द
Name. Amberley company you can solve. Amberley company. Amberley company. Correct. देखो working capital of 6 million not including the estimate about and funded from retained earnings will also be required immediately for the project, rising by the predicted rate of inflation for each year. Predicted rate of inflation is given here. यही ऐसा same question है. And tell me, will you start the question from sale variable cost या post tax operating cash flows? Tell me. Post tax operating cash flows directly given. Expected means sir all inflation given. Correct. चलो do one thing. Amberley company एक ही होमवर्क ले लो. Correct. Amberley ट्रिपल टाइन भी कर सकते हो आप if you want to do. मेरे हिसाब से ट्रिपल टाइन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलो मैं आपको देता हूँ होमवर्क, आपको जितना जमता है उतना करो. ठीक है. चुमारा कंपनी का भी जो पार्ट होमवर्क में आप कर सकते हो दैट आई हैव गिवन टू यू. करेक्ट. चलेगा. नहीं चुमारा मत करो, एटलीस्ट ट्रिपल टाइन और ये दो करो, ट्रिपल टाइन एंड एम्बरले. ठीक है. ट्रिपल टाइन एंड एम्बरले आई हैव गिवन द पार्ट्स. इधर डिस्काउंटिंग रेट नहीं, मैंने डिस्काउंटिंग रेट दिया. दोनों जगह 10% डिस्काउंटिंग रेट लो और आंसर करो. ठीक है. अच्छा लेट्स देन सो आई शेयर दिस. तो आप लिख लो एम्बरले एंड ट्रिपल टाइन. एम्बरले ट्रिपल टाइन फर्नहर्स्ट. ये 3 क्वेश्चन है फॉर यू टू सॉल्व. थोड़ा बहुत 10% वर्किंग किस में लेना है? सॉरी दोनों में. मैं अभी ये क्वेश्चन वाली शीट आपसे शेयर करता हूँ, आप उसी में से देख के करो. उतना ही क्वेश्चन करना है क्योंकि मैं भेजता हूँ आपको. ठीक है. ग्रुप में क्वेश्चंस फॉर होमवर्क एम्बरले ट्रिपल टाइन वो 3 करो बोल के मैं खाना खा के आपको भेजता हूँ. ठीक है. ओके चलेगा. चलिए और करूँ कंटिन्यू या छोड़ दो. बाय बाय फॉर द वीक. करेक्ट. वी विल मीट व्हेन अभी राइट. होपफुली जिन लोगों का एडमिशन रह गए वो खत्म कर दो. तो नेक्स्ट वीक वी कैन व्हाट I can give you the recordings directly on the app. Okay. Anything else left, let me know. Right. If you are not understood anything, now is the right time to ask. In the week, this week only you will not have heavy homework. From next week, heavy homework will start. So get yourself acclimatized to now homework. ये वो सब that is there. Right. चलो then. Can I wrap it up for today? We will meet now. अभी week में जो है tomorrow I will send you a message about Wednesday, Thursday का class. Right. You can come and attend the class, right? Maybe in the night or early morning तो possible नहीं because मेरा 7 to 10 class है. If 11 to 1 or something works with you, that is okay. But better I think रात को 10 to 11 is best time. Okay. चलो. Can I wrap it up? Enjoy whatever is left of your Sunday. We will meet now next Saturday or next नहीं Wednesday को, right? Till then, bye bye. Take care of your health. Bye. Sure. Bye bye bye. Thank you, sir.